Number 140. Last time, sorry. Seal number 140. Sri Tiwari, Sri Raji Kuswaha. Number 140. लगा हुआ इनका तिवारी जी का वो कर दो एसपीसी नन एसपीसी 133 कोई फाइनल नहीं स्टेट ने वैकेशन ऑफ स्टे लगाई है। स्टेट आपको कुछ मुकदमे में हाजिर होना है। स्टेट कह रहे हैं फिर भी आप लोगों की नींद नहीं खुल रही। What is the matter, Mr. अग्रवाल? सर सीलिंग का मैटर है। सीलिंग का है, रिवर्सल फाइंडिंग का केस है। हमने सिविल सूट लगाया था। सीलिंग का है। सीलिंग के केस में दावा मेंटेनेबल होता है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली वो एक अंतिम आदेश है, उसको कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उसको डिसमिस, उस ऑर्डर को। वैकेटिंग स्टे के बारे में क्या कहना है? बस आपने वैकेटिंग स्टे डाल दी, बहस कोई और करेगा। देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट प्रेज फॉर टाइम टू आर्ग्यू दी एप्लीकेशन विद इन रेकॉर्ड IE 5908/22 एज प्रेड लिस्ट आफ्टर 8 वीक्स। देख लिया करो भैया, शासन का एक आध मुकदमा तो आता है दिन भर में बहस करने वाला। हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, शासन का एक आध मुकदमा तो दिन भर में आता है, उसको भी आप शासन को बहस नहीं करोगे। और ये एंजॉय कर रहे हैं कब्जा अपना, सीलिंग हो जाने के बाद भी। अफसर आया, उन्होंने कहा साहब वैकेटिंग स्टे लगा दो, एक आवेदन बनाया, लगा दिया। ऐसा ही होता है ना, तो उस पर आपकी ड्यूटी है तैयार रहना। चलिए, एसपीसी का वो एसपीसी की तारीख कौन सी बताई थी? 18 और 18 तारीख लगाना। एसपी चाहिए, एसपीसी 18।
एडमिट अपील है मैम। एडमिटेड अपील है? यस मैम। कोई दम है? देखी नहीं मैं तो वो वकील साहब बोल रहे थे जो छोटे छोटे केस होते हैं उनको निपटाना चाहिए, यदि छोटा हो तो अभी निपटा देते हैं। देखे नहीं है। क्योंकि शासन के खिलाफ तो छोटा हो नहीं सकता। आज तो कब्जा चलाए रखो अपना, लंबा बनाए रखो कब्जा। एडवर्स पोजीशन का दावा था, क्या क्वेश्चन है? देखी नहीं है मैं। वो एनओसी में फाइल आई थी। ये जब आप देखोगे नहीं तो तय कैसे करेंगे छोटा है? मुझे बताओ, ये कैसे तय होगा छोटा है? रिस्पोंडेंट के लिए छोटा रहता है हमेशा। रिस्पोंडेंट को अपीलेंट के केस में छोटा सा पॉइंट दिखता है। जी। आपको कितना बड़ा दिख रहा है? हमारा तो घर ही उसमें बना हुआ, गृहस्थी है ऐसा कुछ करके। मतलब बड़ा पॉइंट। हाँ तो ये मेरी तो उसने कहा घर मेरा उसने काफी बड़ा पॉइंट है। एज पर लिस्ट फॉर फाइनलिंग इन द फाइनलिंग लिस्ट। मतलब उसमें देखा नोटिस सर्व नहीं किए थे, एक आई और अलाउ हुई थी पहले। फाइल दे दो। क्या है बोलिए, कौन एक्सपायर हो गया? रिस्पोंडेंट नंबर 1 नोटिस नहीं हुए सर उसमें अभी। तो आपने एप्लीकेशन मूव किए हैं? एप्लीकेशन मूव करी है मतलब। कहाँ है? आइए बोलिए। आइए 10840/2006 22/4 2006। कौन एक्सपायर हुआ है? रिस्पोंडेंट नंबर 1 बाबू राव। इसके तो वारिसान पहले से रिकॉर्ड नहीं इसके नहीं है मतलब, वो केशव रिस्पोंडेंट नंबर 2 डाइड हुआ था, उनके वारिसान रिकॉर्ड पे हैं पहले से। हाँ 1 की आपकी डेथ हो गई है? हाँ 1 की भी डेथ हो गई। जो वो उसमें अमेंडमेंट है वो 2 के लिए है, केशव राव के लिए, उसके लास्ट के। फ्लैग ही कर देते आप। जब आपने को हमने फाइल दी तो इसमें फ्लैग लगा देते। कैसे, कब सीखोगे आप? सिंसियर अपॉलजीज। अरे ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इतना तो सीखो कि जब आपको फाइल दी है, कोई आइए मिल गई आपको, उसको फ्लैग कर दो जिससे कि इजी हो जाए। आवेदन कब लगाया था? आवेदन लगाया मतलब 30/10/2006 को। डेथ हुई है इनकी 6/5/2006। 5 महीने का इसमें 30/10 विद इन टाइम है? नहीं विद बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड टाइम है मतलब। तो अदर पार्टी हैज बीन सर्व्ड और नॉट? नो मतलब नोटिस नहीं हुए थे? नोटिस नहीं हुए इस पे। देखो हर्ड ऑन आइए 10/840/2006। और 14/11/4 में, 14/11/4 के लिए भी आप 7 दिन का समय देते हैं, उसको भी नोटिस कर देंगे। 14/11/14 में ये लिखा हुआ है हाँ मतलब देखा उसको कि ये जो है आप रिस्पॉन्ड नंबर 1 के लिए एप्लीकेशन मूव करने के लिए समय चाहते हो, और रिस्पॉन्ड नंबर 1 की एप्लीकेशन पहले से रिकॉर्ड पर है। किसी को फुर्सत नहीं है ना आपको बताने की ना कोर्ट को देखने की। नहीं समझ में आया आपको? आगे समझ में, मतलब मैं बताने वाला था कि एक और ऑर्डर कंप्लाई होने के लिए बचा है इसमें। और इसमें ऑर्डर हो गया 9/4/14 को इस आईए का। वो पहले वाले जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 डाइड हुआ था उसकी एप्लीकेशन के लिए ऑर्डर है वो। कर दें, दोबारा कर दें? और दोबारा कर दें मतलब। 10/840/2000 हार्ड ऑन आइए 10/840/2006 8735/2010 8736/2010। पहले हो तो नहीं गया? नहीं ऑर्डर शीट में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हो गया भैया, नोटिस हो चुका है इस पे। आपको आपने क्या फाइल दी थी? आपने 10840 में ऑर्डर हो गया है इन्हीं आईएएस का। ये 8735 के फ्रेश पीएफ for service of notice on the legal representatives of respondent number 1 Babu Rao.
यस, हेलो कहाँ है वो एफिडेविट? 117/23। जी हाँ चलिए बताइए। हेलो इन दैट एफिडेविट माय लॉर्ड्स फर्स्टली वी टेंडर अनकंडीशनल अरे वो अपॉलजी तो हो गया, सुबह ही हो गया, उसको तो आप भूल जाइए। माय वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ हॉलो इज द अपोलॉजी। चलिए मेन उस पे आइए, सब्सटेंस पर आइए। हेलो पैराग्राफ 4 onwards my हाँ lords. पैराग्राफ 4 ऑनवर्ड्स। So one aspect is that my lords was in the last order sheet my lords was of the view that we are trying to save the guilty persons my lords. यस यस यस। So- नहीं नहीं, पहले तो सब्सटेंस बताइए। जी पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन बताइए, जी। उनका राइट्स एंड ड्यूटीज बताइए, उनको ओरल ऑर्डर्स पे अपॉइंट करने का अधिकार है ये बताइएगा। जी ये सब चीजें एक एक करके चलिए। जी 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 What is the Parents Teacher Association Constitution and the हाँ, rights and इस liabilities attached? That is my lords annexure A1 my lords. A1 देखें उसमें क्या लिखा है। The relevant- A1 पालक शिक्षक संघ के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र, My lords नियमावली starts from page number 10 my lords. पेज नंबर 10। जी समिति का नाम फिर वो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। जी जी, जी पेज 10। यस, जी मतलब समिति का नाम समिति का उससे हमें कार्य मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए टीचर अपॉइंट करने ये सर इसमें कहीं भी अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं है सर। अब एम्प्लॉय नहीं है ना, जी तो ये पॉइंट एक तो पॉइंट नोट कर लेते हैं। जी 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 सर इसमें जो है सर मैं एनेक्चर ये क्या है? A1 R1 क्या है? A1 सर A1 does Sir. not stipulate any condition in regard to appointment of an employee। ठीक है, चलिए सर सबसे पहले सर मैं फिर दूसरा बताइएगा, अगला पॉइंट बताइएगा कि माय लॉर्ड्स ऑफ इसके सचिव जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, सर ये उनके पेज क्या 13 दायित्व और उत्तरदायित्व हैं? सर ये पेज 13 में है कार्यकारिणी सभा। पेज 13। जी कार्यकारिणी सभा सर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसमें सबसे एंड में क्लॉज नंबर 6 में मैं हाँ हाँ, संस्था का सदस्य प्रधान सचिव, हाँ, ये प्राचार्य। संस्था के प्रधान आचार्य हाँ हाँ ये प्रधान प्राचार्य जो होंगे जी जी जी। अब इनके क्या अधिकार हैं? जब अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते तो इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जी ठीक है, सर ये अध्यक्ष 13 14 15 में सर 13 14 15 क्या पेज नंबर? आई एम सो सॉरी पेज नंबर 15 में क्लॉज नंबर 12 इस कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य मैंने पढ़िए क्या लिखा है उसमें। सर कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य जिन इसमें उद्देश्यों कहीं मुद्दे की बात बताइए, इसमें कहीं अपॉइंटमेंट करने का दिया हुआ है क्या? जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और उस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना, शिक्षक को गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने हेतु उनके दायित्व में सहयोग करना, गुणात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुभवी व्यक्तियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर चिन्हित करना तथा गुणात्मक शिक्षा में उनका सहयोग प्राप्त करना, विभिन्न विषयों से संबंधित दक्षताओं में बालकों के उपलब्धि स्तर की मॉनिटरिंग करना इत्यादि। ठीक है जी कहाँ लिखा है इसमें नियुक्ति के बारे में? सर अधिकार एवं कर्तव्य तो
ठीक, अधिकार एवं कर्तव्य तो जी। बताइए ना, कौन सा कर्तव्य पढ़ना है हमको? आपके शुक्ला जी ने ही बोला था ना कि जी। पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने उसका वो किया, नियुक्ति करी, तो कहाँ है? इसमें तो प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए। Since there is no provision for appointment even principal or the secretary of PTA cannot appoint anybody. ठीक है, चलिए फिर बताइए नियुक्ति कहाँ से आ गई है? सर मैं अपनी एक रिपोर्ट मैंने इसके बाद A2 की तरह लगाई A2 भी देख लेते हैं, A2 भी देख लेते हैं। सर पेज नंबर 21 है सर। हाँ, पेज नंबर 20। स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 20 सर। दिस इज बाय द प्रेजेंट असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ हाँ, ये 18 अक्टूबर की है सर। हाँ हाँ, इसमें ही हैज प्रपोज्ड दैट 3 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एट दैट फिटफुल पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ In this case, my lords, what has happened? The annexures which has been filed in the petition. जी, The case of the petitioner in nutshell, my lords, is that he is not being paid the salary as per the collector guidelines from November 2021. This is the exact relief which he has sought, my lords. So when the matter was taken up, my lords, due inquiry was conducted. One inquiry report, my lords, have read it in with the last affidavit. जी जी, Though I would fairly submit, my lords, उसमें हिंदी थोड़ी गलत लिखी गई थी. The inquiry was conducted. Initially, he was being paid as per the circular of the then finance department. क्या था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का? सर तो उसकी नियुक्ति तो दिखाई है अंशकालीन। सर वो वही रिपोर्ट में आया है सर कि अंशकालीन में जो भी होता है सर वो नहीं टाइम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो जाता। आप अपनी मर्जी से अंशकालीन नहीं कर लेंगे। नियुक्ति आदेश दिखाइए, हम आपसे नियुक्ति आदेश ही तो मांग रहे हैं सर, कि उसका अंशकालीन का। आपके सहायक आयुक्त महोदय जो कि ये सब जांच कर रहे हैं और ये R2 लिख रहे हैं, A2 लिख रहे हैं, जी। उन्होंने ही हमारे सामने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और हमने उसको रिकॉर्ड किया है। या तो हमने गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं, किया, नहीं, देन यू मेक एलिगेशन ऑन मी नहीं, दैट आई सर, बिल्कुल। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनकरेक्टली। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। नहीं, तो उन्होंने तो कहा कि PTA से अपॉइंट किया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ओरल ऑर्डर से किया गया था। आप जितना फंसना चाहते हैं हम उतना फंसाते जाएंगे आपको। सर बस क्लियर नहीं नहीं नहीं, क्लैरिटी नहीं। जो लिखा है सर मैं तो इंस्ट्रक्शंस में वही। आपके इंस्ट्रक्शंस से नहीं चलेगा काम। कहाँ प्रावधान है मौखिक आदेश का? आई विल आस्क योर चीफ सेक्रेटरी टू फाइल हिज एफिडेविट। He being head of the bureaucracy should point out कहाँ है प्रावधान मौखिक नियुक्ति आदेश का? इसको बिल नहीं है इधर, तुम्हें दे एक सेकंड उठाना, गाउन फंस गया नीचे। बस, थैंक यू। कहाँ है प्रावधान, इतना बता दीजिए। शासन में मौखिक आदेश से नियुक्ति का कहाँ प्रावधान है? देखिएगा, श्री विनायक शाह प्रसाद शाह फॉर द पिटिशनर, आई हैव परयूज्ड एफिडेविट फाइल्ड बाइड डॉक्यूमेंट नंबर 117/23। This affidavit is contradictory to the earlier submissions made by श्री संतोष कुमार शुक्ला। जी सर। यही नाम है इनका? संतोष शुक्ला सर। संतोष शुक्ला, कुमार हटा दीजिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डिंडोरी, फुल स्टॉप। लेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑब्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फाइल हिज पर्सनल एफिडेविट दैट एज टू अंडर विच प्रोविजन ऑफ government instructions there can be an order for oral appointment. There can be an oral order for appointment as has been contended by Shri Santosh Shukla before this court on the last date. Full stop. Next para. He will also clarify that when there is no appointment order, then how can that order be classified as part-time or full-time employment as is sought to be made out by Shri Santosh Shukla that petitioner was working on part-time basis. Full stop. This oral submission is not backed by any documentary evidence. Full stop. Let Principal Secretary file his personal affidavit. List on
21 नवंबर 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट। इसी में दोबारा आगे टाइप नहीं होगा, करा लीजिएगा। नंबर 9 फिर So first application under section 439 of the CRPC for grant of bail lordship of the applicant. The applicant is in custody since 15/7/2023 and charge sheet has already been filed. Investigation has already been completed. जी जी The date of incident is 8/4/2023 lordship जी and FIR has been lodged on 9/4/2023 lordship जी। against unknown person lordship. There is no eyewitness of the फर्स्ट incident. बिल हमारे पास क्यों आ रही है? हमने किसकी बिल डिसाइड कर? रिट पिटीशन आपने सर एक फाइनल करी है, मैंने भी वो पिटीशन से हम नहीं करेंगे, उसको भेजिए बेल रोस्टर में दीजिएगा। I have not decided bail application for any of the persons. Merely deciding a writ petition under Article 226 will not give jurisdiction to this court to hear and decide bail applications. Let bail application be listed before the bench, which has been given regular roster to hear and decide the bail applications. Otherwise, this will become a regular feature to carry out bench hunting. Full stop. ये आपकी WP क्या क्रिमिनल थी क्या? Well, है? it was for direction for fair investigation. हाँ, full stop. Merely entertaining a writ petition for fair investigation is not a sufficient reason to show indulgence in the matter. Registry is directed to list this case before the appropriate bench. Lordship, दिखाइएगा तो may I submit my lord? Just I would like to refer this provision of 17B, your lordship. I have filed affidavit as per rules provided 17B. May I read, your lordship? 17B. What is the concept of 17B? To that effect, I filed affidavit before the CJIT, your lordship. My lord. 17B का एफिडेविट सीजीआईटी के सामने कैसे फाइल होगा? वकील साहब थोड़ा कानून तो हमें समझाइए। 17B इनफैक्ट जो कंसेप्ट दिया है सर उसमें। नहीं कंसेप्ट नहीं, 17B की कंप्लायंस किस स्टेज पर होती है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं हमें नहीं मालूम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। मैं रेडी हूं लॉर्डशिप। उसका एफिडेविट सीजीआईटी में कैसे फाइल हो जाएगा? एफिडेविट उसका तो यहाँ भी फाइल है, बट जो कंसेप्ट है कि मैं कोई भी नहीं होता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट में मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने मजदूरी तो कर सकता है सर, बट गेनफुल का नहीं है उसमें। आपके दाएं बाएं भागने से कुछ काम नहीं होगा। जजमेंट पढ़िए 2013 का 10 जजमेंट पढ़िएगा जी, पैरा नंबर 38 में कैंडिडेट। पैरा नंबर 38। मैं रेडी हूं लॉर्डशिप। एक मिनट रुकिएगा। Yes. The propositions which can be culled out from the aforementioned judgment are: in cases of wrongful termination of services, restatement with continuity of service and back wages is the normal rule. The aforesaid rule is subject to a rider that while deciding the issue of back wages, the adjudicating authority or the court may take into consideration the length of service of the employee, workman, the tenure of the nature of the misconduct, if any found proved against the employee, workman, the financial condition of the employer and similar of the factors. Next, ordinarily an employee or workman whose services are terminated and who is desirous for getting back wages is required to either plead or at least make a statement before the adjudicating authority or court or first instance that he was not gainfully employed or was employed on lesser wages. I filed before the CJIT. Because if an employer wants to avoid payment of full wages, then it has to plead and also lead cogent evidence to prove that the employee workman was gainfully employed and was getting wages equal to the wages. स्टेटमेंट देखें जी, स्टेटमेंट पढ़े आपका P1 था ना? हाँ जी, एफिडेविट जो हमारा। हाँ एफिडेविट था जी, उसका पेज पैरा 10 बताया था आपने। 9 सर। 9, चलिए 9 देख लेते हैं। हाँ
पढ़िए 9। यह कि सर्विस बर्खास्त होने से लेकर आज दिनांक तक मेरा करीब 2 लाख रुपए मुकदमे में खर्च हो गया और प्रत्येक पीसी में मैं आने का प्रयास किया हूं, जिस वजह से मैंने अच्छे से मजदूरी भी नहीं कर पाया। इस प्रकार मैं किसी संस्था या किसी बर्खास्तगी के बाद नौकरी नहीं किया। क्योंकि मौत नहीं आई इसलिए जिंदा हूं, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मुझे फुल वेजेज संपूर्ण दिलवाया जाए। ये कहाँ पढ़ दिया आपने? ये हमारा जो स्टेटमेंट है सर, इसमें P1 में हमारी पिटीशन का। भाई P1 में आपने पैरा 9 के बाद में पैरा 10 कंटिन्यूएशन में कहाँ है ये? गया कहाँ? आपने पेज सारे उल्टे सीधे लगाए हुए हैं। That handwritten passage is cross-examination. Let me complete that I would बात नौकरी नहीं की क्योंकि मौत नहीं आई तो जिंदा हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो गया, फिर सत्यापन आ गया सर इसका। ठीक। तो ये कोई एस्टेब्लिशमेंट में गैनफुली में नहीं किया, इसीलिए मैं 17 में पढ़ा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट लिखा है कोई उतना इक्वल टू गैनफुल में है देन, और ये नहीं देना चाहेंगे देना है तो दीजिए ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्लीड। अच्छा पढ़िए 17 भी पढ़िए। जी जी। तो सर इसमें हमारा 17 भी हम क्या आई एम गेटिंग नथिंग योर लॉर्डशिप, क्योंकि वो सुपर इन्वेट हो गया था तो उसमें कुछ भी नहीं मिला है हमको उन पे। पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन डिपेंडेंसी इन हायर कास्ट, वेयर इन एनी केस अ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बाय इट्स अवार्ड डायरेक्ट्स reinstatement of any workman and the employer prefers any proceedings against such award in a high court or the supreme court, the employer shall be liable to pay such workman during the period of pendency of such proceedings in the high court or the supreme court full wages last drawn by him inclusive of any maintenance allowance admissible to him under any rule if the workman had not been employed in any establishment during such period and an affidavit by such workman had been filed to that effect in such the establishment similar to the my payment your lord's salary. अच्छा ठीक। So then my lord what this provision has what happened my lord, circumstances this I was superannuated by filing of this writ petition, so I am now getting nothing your lordship, nothing has been found my lord. Then I would like to submit my lord that judgment 38.4. The cases in which the labor court tribunal exercises power under section 11A, the industrial dispute 1947 finds that even though the inquiry held against the employee workman is consistent with the rule of natural justice, certified standing orders, if any but hold that the punishment was disproportionate to the misconduct found proved, then it will have the discretion not to award full wages. However, if the labor tribunal finds that the employee or the workman is not at all guilty of any misconduct or the employer had hoisted a false charge, then there will be ample justification for award of full. In my case, my lord, inquiry was found to be vitiated because natural justice there is also bias because before so cause notice, I filed a complaint under section 420 before the judicial magistrate first class against the manager itself. So as soon as he received summons, they issued me so called notice. I have written my statement claim and each and everything. There is this is not denied or lordship. Also this is a case of victimization. I pleaded that in my affidavit and my statement claim also. Para number 2 and 3. Para number 3686. In a number of cases, the superior court have interfered with the award or primary adjudicating authority on the premises that falsification of litigation has been long time, ignoring that the majority of the cases the party are not responsible for such delays. Lack of infrastructure and manpower is the principal cause of delay in the disposal of cases. For these litigants cannot be blamed or penalized. It would be amount to grave injustice to an employee or workman if he is denied back wages simply because there is long lapse of time between the termination of his service and finality given to these cases. The employer in an advantageous position vis-a-vis the employee or workman, he can avail the service of best legal brain for prolonging the agony of the sufferer. The employee or workman who can ill-afford the luxury of spending money and liar with certain amount of fame. Therefore, in such cases, it would be prudent to adopt the court's suggestions. This is Hindustan 10 works. This is a judgment of 3 works, three benches, your lordship. That has been relied in this case. Three judgment of Hon'ble Apex Court, which judgment has been relied in this case. 3 judges. 3 judges. Continuity of service is a normal rule, your lordship. If inquiry is vitiated and workman is not blamed, your lordship. That's why I filed, my lord. What happened, my lord? 2 increment had been withdrawn. Even, my lord, there was the so-called notice, and I also played victimization. So then, my lord, London CJIT are to have granted full back wages and, my lord, full setting aside the dismissal order, your lordship. Anything else? Merely, my lord, what happened in this case? Management has directed to given an opportunity to prove misconduct.
Then I filed this affidavit for the purpose of my lord कि I was not gainfully employed. Then in my affidavit they have cross-examined. Then my lord और कहाँ होता है क्रॉस एग्जामिनेशन? वो उसी में और they have तो बोला इन माय एफिडेविट, तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या दूसरे के एफिडेविट पे होता है क्या? जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ मेरा जो पर्पज एफिडेविट का था कि कोई ट्रिब्यूनल में एफिडेविट दे डिड नॉट एड्यूस एनी एविडेंस. क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या आया जी उसमें ये बोला कि 10 दिन के ज्यादा हम उसमें वो थे सर, जबकि हमारी पूरी वो है हमारा एफिडेविट है शो काज में हमने डिनाई किया है और पूरी तरह से हैबिटेटेड. जब इंक्वायरी हो गई तो इट वाज द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस एविडेंस और यही सीजीआईटी ने बोला कि आप अपना प्रूव करिए केस. तो दे डिड नॉट फाइल एनी डॉक्यूमेंट, दे डिड नॉट प्रूव एनी एड्यूसिंग बाय एनी एविडेंस. और मेरे एफिडेविट में उन्होंने क्रॉस एग्जाम करके ये बुलवा लिया कि हाँ 10 दिन से ज्यादा हम एब्सेंट थे. ये सर तो दे आर टेकिंग एडवांटेज दैट यू नॉट. ठीक. तो उसमें भी सर ये भी हो जाए. बुलवा लिया आपसे गन पॉइंट पे बुलवा लिया गया? नहीं मतलब ये उसमें जो बोला उसमें बस उतना ही इनका जो वो है इतना ही वो है सर. दे डिड नॉट फाइल एनी एफिडेविट, दे डिड नॉट फाइल एनी एविडेंस और ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से आया सर. इन फैक्ट दे डिड नॉट प्रूव मिसकंडक्ट, इवन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन बाय लॉर्डशिप. ठीक. एंड यस बस. My lord, in paragraph 9, there are two charges against the petitioner, my lord. One that is habitual absenteeism, and the second one, absenteeism for more than 10 days. Now in his cross-examination, he admits he was absent for more days, no leave application was given, nothing. Therefore, in paragraph 9 of the award, your lordship will find that the learned tribunal interfered on the question of, held that one charge is not proved and one charge proved, my lord. Which paragraph 9? Paragraph 9 of the award, my lord. Just my lord. Read to my lord. Just Though management has not reduced the evidence, it has come on the evidence. The management has not reduced the evidence about the charges against its cross-examination that cost 26.30 unauthorized absence more than 10 days is established. The evidence of management did not disclose absence of workmen. Therefore, charge of habitual absenteeism under section 26.24 cannot be proved under these charges. Next clause is proved against the workman. For the reason I record my finding in point number 1, charges under clause 26.30 is proved, charge under 26.24 not proved, my lord. Then the learned tribunal goes on the question of back wages, my lord. My learned friend had also cited the judgment of Deepalu Gundu. Like your lordship will see, Deepalu Gundu is a case of unlawful termination, my lord. Here and after the inquiry it was terminated. Now the learned tribunal has only interfered on the question of proportionality, my lord. Not that I have not been able to substantiate charges or not, my lord. If the charges stood proved, that judgment the tribunal rightly held not applicable, my lord. These petitions are filed by the workmen and the management respectively, being aggrieved of award dated 27th August 2014, passed by learned Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court Jabalpur in case number CGIT/LC/R/174/99. Full stop. Next para. The Net Council for the Workmen is aggrieved of the fact that Learned Tribunal has denied him 50% back wages and has ordered for his reinstatement with 50% back wages only. Full stop. The reading para 9 of his affidavit, which was filed before the Industrial Court, it is submitted that workman had categorically deposed in para 9 of his affidavit that para 8 of the affidavit. नहीं भाई, एक सेकंड. In para 9, ठीक है, para 9 of the affidavit that he had to spend about 2 lakh rupees in the litigation from the date of his termination. Full stop. He makes an attempt to appear on each date before the court, as a result of which he is not able to perform his duties properly. Full stop.
And thereafter he has said that because of the aforesaid condition, he could not work in any establishment, full stop. Then he stated that since he did not meet his end, comma, he is alive, therefore he be given order of grant of reinstatement with full back wages. Next para. Shri Reliance is placed on the judgments of Supreme Court in case of Deepali Gundu Survase versus Kranti Junior Adhyapak Mahavidyalaya within bracket D.Ed and others 2013 का 10 SCC 324 wherein reading para 38 of the judgment, it is pointed out that since petitioner was not employed in any establishment and onus was to be discharged by the employer, that petitioner was gainfully employed, denial of back wages is assailed. Next para. Shri Anup Nair, learned counsel for the respondents, in his turn submits that they are challenging the finding of the tribunal substituting punishment of termination as was inflicted on the workmen by the employer with stoppage of two increments. Two increments with cumulative effect. With cumulative effect. Whereas if there was any defect in the departmental inquiry, then matter should have been remitted back to the employer for conducting proper inquiry or for deciding the quantum of punishment. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, especially the provisions as referred by Shri Ram Sufal Verma as contained in section 17-capital B of the Industrial Disputes Act 1947, this act does not define establishment, full stop. Thus, petitioner's contention that as per the law laid down in case of Deepali Gundu Survase, since petitioner was not employed in any establishment of the like nature, he will be deemed to be unemployed is not made out, especially in terms of the averments made by him in para 9 of his affidavit, which is dated 10 June 2013, which is in fact a tacit admission of his employment during the period of termination. Next para. It is true that employment in terms of the paragraph 38. Three. 38.3. 38.3 will entitle him to some back wages as he was not gainfully employed and was getting wages equal to the wages he/she was drawing prior to the termination of service, but it cannot be set full stop. Thus, as far as the issue of grant of full back wages is concerned, in view of the admission made in para 9 of the affidavit by the petitioner himself, case for full back wages is not made out. Next para. In fact, in case of Deepali Gundu Survase, in para 38.4, it is noted as under, within inverted commas, 38.4. The cases in which the Labour Court / Industrial Tribunal exercises
power under section 11 dash capital A of the Industrial Disputes Act, 1947, and finds that even though the inquiry held against the employee oblique workman is consistent with the rules of natural justice and oblique or certified standing orders, if any, but holds that the punishment was disproportionate to the misconduct found, proved, then it will have the discretion not to award full back wages, full stop. However, if the labor court oblique industrial court finds that the employee or workman is not at all guilty of any misconduct, or that the employer had foisted a false charge, then there will be ample justification for award of full back wages, full stop. Next pair. Back wages, full stop, inverted commas, close. In para 38.5, Honorable Supreme Court has observed as under, within inverted commas, 38.5 dash dash, उसके आगे लिखिएगा, the courts must always keep in view that in the cases of wrongful oblique illegal termination of service, the wrongdoer is the employer and the sufferer is the employee oblique workman, and there is no justification to give a premium to the employer of his wrongdoings by relieving him of the burden to pay to the employee oblique workman his dues in the form of full back wages, full stop, inverted commas, close. Next pair. When these aspects are taken into consideration, then finding recorded by the learned tribunal in para 9 of the award that employer could not prove the aspect of willful absence but could prove the aspect of absence for more than 10 days as has been admitted by the workman, which is violation of clause 26.30 of standing orders and held that charge of habitual absence under clause 26.24 of standing orders is not made out, is a just and proper finding. Next para. That finding does not call for any interference, as it is based on the evidence as was given by the employee himself and admitted in his cross-examination. Next para. As far as grant of back wages is concerned, in terms of paragraph 38.3 of Deepali Gundu Survase, since there is no blanket or clear denial of not being gainfully employed at all, exercise of discretion to award 50% back wages along with reinstatement cannot be faulted with full stop. Next para. As far as substitution of wisdom of the tribunal to substitute the punishment awarded by the disciplinary authority is concerned, when this is examined in terms of the paragraph 38.5 of the judgment of Deepali Gundu Survase, it is evident that employee being in a continuous disadvantageous position and remanding the matter back to the employer would not have cured that disability which is suffered by an employee, and
with a view to curtail prolongation of disciplinary proceedings if learned tribunals substituted the punishment looking to the gravity of the misconduct admitted by the workman uh, leading to violation of clause 26.30 of the standing orders, especially looking to the fact that the order of termination was of the year 1997. हैं? सही fact बताइए. 15-12 सितंबर. And award was passed on 27th day of August 2014, that is almost after 17 years, substitution of the punishment cannot be said to be arbitrary or illegal, full stop. Thus, substitution of disproportionate punishment with an appropriate punishment under the facts and circumstances cannot be faulted with. Thus, in the opinion of this court, the award having been passed in a comprehensive, balanced manner cannot be faulted with to cause interference in the supervisory jurisdiction of this court. Both the petitions fail and are dismissed. Most of the cases, serial number 4, the Dharmendra Swami. My Lord, on 27th of October, my Lord was pleased to allow my amendment applications. In pursuance of that order, I have incorporated the amendment and implemented the private respondent, my Lord. The reply is awaited, my Lord. Private respondent के लिए कौन आ रहा है? My Lord, गवर्नमेंट के रिप्लाई को हम सपोर्ट कर रहे हैं और ठीक है, बस बहस करी. सर 4 केसेस है जिसमें प्राइवेट रेस्पोंडेंट को इम्प्लीट किया है. किया होगा आपने. एडजॉर्नमेंट मत मांगिए, बहस करिए, अपना केस बताइए, प्रमाणित करिए. यस सर. जी, क्या मैटर है आपका, क्या डिफेंस है? सर माय लॉर्ड में टेक द ब्रीफ ऑफ दिस 4.6 सर. 4.6 ओके, वो ले लेते हैं. 4.6 20942. जस्ट अ मिनट, 4.6 खोलने दीजिए. किसमें 4.6 था सर. 4.6 जी 20WP20942. हाँ चलिए. May I start, sir? Challenging the advertisement. आस्था स्व सहायता समूह. Yes, sir. Sir, I am challenging Annexure P1. Annexure P1 at page 12, my lord. Sorry, sir. Please, Annexure P1, page 12. P1 page 12. जी. एक सेकंड. जी. Sir, this is an order 12th of August 22, my lord. जी. यस बताइएगा. Yes, sir. ये बिगर एडवर्टीजमेंट के कैसे करते हैं? Advertisement issue, my lord, we have filed the copy of advertisement annexure R1. एक सेकंड. 12/8/22 impugned order annexure P1 12/8/22. Yes, sir. Yeah, advertisement. This order has been issued. एक सेकंड. annexure R1. किस तारीख का एडवर्टीजमेंट है आपका? ये सागर दिनांक 21/2/2022. 21 फरवरी 22 का है सर. 21 फरवरी 22 का एडवर्टीजमेंट. अब ये ऑर्डर इशू कर रहे हैं 12 अगस्त 22 को. 21 फरवरी 2022. जी. एक सेकंड. एडवर्टीजमेंट
एनेक्सर R1 जी ठीक। 21/2/22 का सर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं। इनके रिप्लाई में देखें सर, एक सेकंड रुक जाइए, इसको पढ़ने दीजिए। समूह के प्रस्ताव आमंत्रण सूचना, समूह ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें लगा हुआ है क्या साथ के बाद सब क्या जाएंगे, ये कुछ ये सब कुछ नहीं जाएगा। और इसके साथ एक ये मेल और लगाना जी। 21 फरवरी 22 का है सर। अब सर काइंडली सी अगेन द इम्प्यून्ड ऑर्डर। इम्प्यून्ड ऑर्डर में इन्होंने जिक्र नहीं किया इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। लिखा तो है ऊपर। नहीं सर, 28 से 21 एवं अच्छा नहीं सर, वो तो गाइडलाइन है। हाँ हाँ जो अभी सीरियल नंबर 3 के केस में ठीक, पॉइंट समझ गए आपकी बात। बताइएगा जरा थोड़ा सा इसको वकील साहब। सर नहीं इनसे पूछ रहे हैं। ये जो आपका R1 है जी, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? R1 की डेट क्या है? R1 की डेट है 21/2/22। 2022 21/2/2022। 21 इसका जिक्र कहाँ है एनेक्सर P1 में? क्या आप 21/2/22 के अनुसरण में जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं 12/8/22 को? जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया था उसके अनुसरण में ये कार्रवाई हो रही है। When you called for expression of interest, you must have shortlisted certain agencies. There must have been some proceedings. You must have made a comparative chart. किसका? और इसमें हवाला क्यों नहीं है? जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने बुलाया 21/2/2022 को, तो उसका हवाला क्यों नहीं है इसमें? जी सिर्फ अपने अपने लोगों को उपकृत करने का प्रोग्राम है ये। आई प्रेफर एडिशन। अब प्रेफर नहीं होता, आज तो पिटीशन डिसाइड हो जाएगी। Because 4.8 minute, the matter is similar, my lord, and lord, they have participated in the advertisement. In subsequent to advertisement, my lord, we have annexed. पहले एक एक करके चलने दीजिए। अभी कौन सा नंबर चल रहा है? 4.6 4.6 minute। हाँ, जब आएगा नंबर तब बताइएगा। अभी पहले सब में यही ऑर्डर है ना? P1 का यही ऑर्डर By same advertisement। Same advertisement। एडवर्टीजमेंट का कहाँ इसमें हवाला है कि हमने ये 21/2/2022 को एडवर्टीजमेंट निकाला और इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जिनके नाम से ये 12/8/2022 का आदेश निकल रहा है? इतना बस बता दीजिए। पहले इसको तो देख लें, उसके बाद में 4.8 जब आएगा तब आप बीच में खड़े होकर थोड़ा ना। in almost cases my lord petitioner also बताइएगा उसमें। yes as per reply my lord in almost cases my lord the petitioners have participated in कहाँ लिखा है रिप्लाई में? आपने पढ़िए कौन सा रिप्लाई है? नहीं सर, इसमें और भी केसेस में सर रिप्लाई है। नहीं इस केस की बात करें, अभी जो खुला उसकी बात करें। फिर एक एक करके देखते जाते हैं। 9 केस हैं, एक एक करके देख लेंगे अगर आपको ऐसी मंशा है तो। इसमें सर पैरा पॉइंट 7 में लिखा है, क्या लिखा है? it is have to mention here that the petitioner has also participated in the UI proceedings and the work order has given as per the select come merit list. 7 page number 2। कहाँ है वो मेरिट लिस्ट? Where is that merit list? सर ये 12/8/22 का ही एक मिनट रुक जाइए सोनी जी। कहाँ है मेरिट लिस्ट? बताइए ना। सर इसमें पेश नहीं किया हमने। क्यों? आपके घर लेने आएंगे क्या उसको? आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? कोर्ट आपके घर देखने आएगा उसको, मेरिट लिस्ट को? सब लिखना रहेगा, वहां से लिख या ऊपर ही लिख दे, वो अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ लिखा है इसमें आपने ऑर्डर में मेरिट लिस्ट के अनुसार? तो पहले पे निकाल देता हूँ। आप कौन सी किस्म? अच्छा ये बैक टू बैक।
20,665 फोन नंबर कौन सा है? 20,600 कब खोली आपने ये निविदा? 8/3/2022 को लास्ट डेट थी जमा कराने की। ठीक है, फाइल सम अदर केसेस माय लॉर्ड, दे आर कनेक्टेड केसेस माय लॉर्ड। वो कनेक्टेड देखेंगे पहले इसको, पहले इसको तो सेटिस्फाई कर दीजिए सर। मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरिट लिस्ट जो फाइल है हमारी, हाँ, सीरियल नंबर WP नंबर 20,655 में फाइल है। 20,655 भी देख लेते हैं, चलिए। 20,655 4.1 रिटर्न के साथ है। हाँ, रिस्पोंडेंट नंबर 6 की तरफ से 593/23 कि 17703/22 कौन सा देखना है? 20655 वो तो पिटीशन का नंबर हो गया। अब डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा देखना है? 2 रिटर्न है इसमें। कठर जी, इस तरीके से मेरे कोर्ट में मत, कृपा करके मत खड़े हुआ करिए सर। क्योंकि बेटर छुट्टी का आवेदन देके आप घर में बैठे, तैयारी करके आए या ना आए कोर्ट में, बता दें आपके महाधिवक्ता महोदय को। आपने बताया वो केस खोल लिया 20655, और आपकी ये असिस्टेंस का लेवल है। सरकार की दिक्कत तो यही है कि ठेकेदार की गाइडेंस पे चल रहे हैं आप। वो जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट आपको बता रहा है वो आप उतना बता रहे हैं हमको। Sir, I prefer. नहीं, what pray for time? I will not grant. I will not. No, I will not grant you time. You show me from the document. At your instance, I have opened this case 20655. मतलब in particular case, my lord, marriage is not filed. नहीं, 2065 बोला ना आपने, 20655 उसमें बताइए कहाँ है मेरिट लिस्ट। आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दी है। आप ही ने कहा था मिस्टर शाह के कहने पे कि 20655 खोल के देखिए, वो हमने खोल लिया है। अब आप मुझे बताइए किस रिटर्न के साथ में आपकी मेरिट लिस्ट लगी हुई है? यस मिस्टर शाह, बताइए कहाँ है मेरिट लिस्ट? किस केस में लगाई है आपने? जी 20,655 में लगाई है बस। कहाँ लगाई है? ये नंबर इसमें लिखा नहीं है, सॉरी। बिगड़ तैयारी के खड़े होने की आदत हो गई है हाईकोर्ट में आप लोगों को।
आपने अप्लाई किया था, आपने उस एडवर्टीजमेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हाँ उस पर अप्लाई किया था ना, ठीक है। कहाँ है आपकी एप्लीकेशन, कहाँ है आपकी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज नॉट ऑन रिटर्न। Why? You can appear before the High Court like that. If you had applied, you should show the acknowledgement that you had applied. Where is that application? नहीं, not tomorrow. Today cases are going to be decided. हाई कोर्ट में वकालत करने का तरीका सीखिए आप लोग। आप लोगों ने हाई कोर्ट को बिल्कुल मजाक बना दिया है। 2022 से केस पड़े हुए हैं। अगर आपका ये केस है कि 21/2/2022 को एडवर्टीजमेंट निकला, उसके अनुसरण में आपने अप्लाई किया था और आपको कंसीडर नहीं किया गया, तो आपको अपनी एप्लीकेशन तो पहली चीज लगाना चाहिए थी साथ में। Where is that application? That is not on record. Then you are not entitled to any equitable, क्योंकि इनकी चार्ट टेबल लगी हुई है यहाँ पर। सर वो सब्सिक्वेंट होगी। किस तारीख की है वो टेबल? सर वो 12/8/22 के बाद का है। देख लेते हैं वो 12/8/22 के बाद की है, कब की टेबल है ये, जो इन्होंने सिलेक्शन इसी परसुएंस में की है। एक सेकंड, इस टेबल की डेट क्या है बताइएगा। अब आपको इतना भी गाइड करना पड़ेगा मिस्टर कठर। ये आईए है 15845/2022। नाउ यू वांट दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी स्पून फेड। चम्मच से जैसे बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसा आपको खिलाना पड़ेगा। बताइए इसकी तारीख क्या है? तारीख नहीं क्लियर नहीं है। ये आपके लोक सूचना अधिकारी बिगड़ तारीख दिए कैसे कर देते हैं? तारीख नहीं। और इस प्रोसीडिंग की तारीख क्या है? Let District Program Officer, Women and Child Development, District Sagar, remain personally present, along with the original record in which applications filed by various self-help groups were processed, so leading to issuance of order dated 12/8/2022. List tomorrow, top of the list. Call him with the original record. सारी एप्लीकेशंस फ्लैग करिएगा। ये 10 पिटिशनर हैं, किस किस की जो है एप्लीकेशन आई थी, किस किस ने अप्लाई किया था। एंड डोंट वेस्ट टाइम। आप चाहे 12 बजे तक बैठे, सुबह 5 बजे तक बैठे हैं, कॉल हिम राइट नाउ एंड कंप्लीट दी रीडिंग्स। और उसके रिकॉर्ड की 5-5 फोटोकॉपी कराइएगा, एक इनके पक्ष को देने के लिए, एक हमको देने के लिए, एक प्राइवेट रिस्पोंडेंट को। सब रात को ये कार्रवाई पूरी हो जाना चाहिए। कल सुबह फर्स्ट केस लूंगा इसको मैं। नहीं, एक दिन नहीं बढ़ाऊंगा मैं। This order is being passed because allegation of the petitioner is that an advertisement was issued in calling for expression of interest on 21/2/2022 as has been filed by the respondents as annexure R1. Next para. Petitioner's contention is that they had applied in pursuance of this expression of interest, but arbitrarily, without considering their applications, which, as admitted by Shri Dharmendra Soni, are not brought on record by the petitioners, which they will bring on record by tomorrow morning, along with due acknowledgement showing that those applications were actually filed, failing which an adverse inference will be drawn against the petitioners. बुला लीजिए, ऐसे ही 5 सेट बना लीजिएगा और फाइल करने की परमिशन अगर बाद में मिलेगी, पहले केस देखूंगा मैं। क्या हुआ? इतना others have been given work order overlooking the claims of the petitioners. Next para. Shri Shah though submits that along with IA 15845/2022 and closed along with WP 20655/2022, a chart was obtained
under the Right to Information Act as issued by District Program Officer, Women and Child Development, District Sagar, but it does not bear the date as to when these proceedings were drawn, and therefore order for calling for the original record. Full stop. Let order be complied with positively, failing which this court may be constrained to call for the higher officers of the department. List tomorrow, top of the list as first case. There are interim orders in our field. कुछ नहीं है अभी, कल सुबह देखेंगे. None for the petitioner. It appears that petitioners have lost interest in pursuing the remedy. Petition is dismissed for want of prosecution. None for the petitioner. Shri Vijay Kumar Shukla, learned panel lawyer for state. Shri Utkarsh Agarwal for the respondent number 3 and 4. As there is non-compliance of the order dated 30/10/2023 and nobody is appearing for the petitioner, it appears that petitioners have lost interest, dismissed for want of prosecution. ये बताइएगा. My lord, I am for the petitioner, my lord. This petition, my lord, we have challenged the order, my lord, passed by the appellate authority under section 127 of the Electricity Act. This order is, my lord, dated 9. That order is annexure. It is, my lord, annexure P7 at page, my lord, 114, my lord. क्या लिखा उसमें उन्होंने? This was, my lord, the basic of bare facts of was, my lord, that the respondents, my lord, were the HT consumer. They were entitled to load up to 6,500 kVA, my lord. In May 2008, admittedly, my lord, they had drawn
there are two cases, my lord. In one case, 10,680 kVA, my lord. In the other case, 77. ST consumer. ST consumer. तो So क्या- there क्या was problem? overdrawal, my lord, or the drawal of power, my lord, more than the contractual limit. जी जी. So now, my lord, this order appeal, this order, my lord, impugned is dated, my lord, 19/8/2009, my lord. Identical issue, my lord, has been answered by the Honorable Apex Court, my lord, in 2012, volume 2, SCC page 102, my lord. I have already supplied the list, my lord. Exactly the same issue was there, my lord. And it has been held that in such a case, my lord, 126 would be attracted and the assessment order, my lord, could be issued. I have given, my lord, the relevant paragraphs also, my lord. Paragraph 12, 44, 71, 72 and 87, my lord. Your Lordship may kindly see paragraph 12, my lord. This was also a case, my lord, that there was sanctioned limit of, my lord, 110 kVA and the respondent had drawn, my lord. Just a minute. जी. So this matter has been remanded to the assessing authority. Supreme Court ने यही तो किया है. जी. In terms of section 126(5), देखिएगा, petitioner's contention is that it is a case of excessive drawal of power by a ST consumer who was licensed to draw power up to a sanctioned load of 6,500 kVA. Full stop. It is submitted that since there is an excess drawal, the case will be one under section 126 within bracket 5 of the electricity क्षमा करें समय. इसमें क्या था कि प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था रिट पिटीशन में. तो इसमें ड्यूअल क्वेश्चन वाज डिसाइडेड दैट देयर वाज एन अल्टरनेटिव रेमेडी. हमारे केस में प्रोविजनल असेसमेंट के बाद फाइनल असेसमेंट हो गया और फाइनल असेसमेंट के बाद 126 के ऑर्डर को 127 में क्वेश्चन किया गया, व्हिच अपीलेट ऑर्डर इज बिफोर योर लॉर्डशिप. So in this case, my lord, with all respect, my lord, there would not be any question of remand, my lord. This appellate order in view of the Supreme Court order deserves to be, my lord, set aside. चलेगा. Full stop. Therefore, authorities were authorized to make an assessment for excess drawal. Full stop. This order of assessment was finalized by the final authority, and thereafter in appeal, the order has been set aside by judgment dated 19/8/2009, passed by appellate authority under the Madhya Pradesh, under the Electricity Act 2003, section 127. Under section 127. Full stop. Next paragraph. It is submitted that since assessment is made under section 126, comma, तो फिर ये जजमेंट कैसे अप्लाई होगा सर? 127 अपील के लिए परमिट तो करता है. तो अपील की और अपील में ये होल्ड कर दिया कि लोड फैक्टर के कारण 126 was not attracted. Whereas Honorable Supreme Court has been pleased to hold that whenever there is drawal of electricity more than the contractual limit, it would attract 126. So therefore our assessment. And but the appellate authority under section 127 erred in holding that excess drawal will not fall within section 126, and therefore assessment or final assessment made by the authorities is incompetent. Next para. Shri.
Amal Pushpa Shoti places reliance on the judgment of Supreme Court in Executive Engineer, Southern Electricity Supply Company of Orissa Limited, within bracket South Co, bracket close, and another versus Shri SRI, Sitaram Rice Mill, 2012 का 2 SCC 108, and has held that drawal of excess power, that is in excess electricity, नहीं ऐसा करिए, held that consumption of electricity in excess of sanctioned load, or involving change of user or category of customer, or involving pilferage not amounting to theft, is covered under expression unauthorized use of electricity as defined in section 126 explanation within bracket small b bracket close of the Electricity Act 2003, and therefore the finding of the appellate authority is arbitrary and illegal. Next para. There is no opposition to this legal proposition put forth by learned counsel for the petitioners. Full stop. Therefore, in view of a three judges bench decision of Honorable Supreme Court in South Co versus Sitaram Rice Mill, which clearly provides that consumption of electricity in excess of sanctioned load will fall within the provisions contained in section 126 within bracket 6, another bracket small b, another bracket small 4, Roman 4, for the which नहीं इसमें दूसरी बात कह रहे हैं भाई, ये तो पढ़िएगा जरा जी, 126 का 6 पढ़िएगा जरा जी. The assessment made under this section shall be made at a rate equal to twice the tariff applicable for the relevant category of services specified in subsection 5. Explanation: for the purpose of this section, assessing officer unauthorized use of electricity means the usage of electricity by any artificial means or by a means not authorized by the concerned person or authority or licensee, or through a tempered meter, or for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized. So you'll have to show that the usage was for purpose other than the purpose for which it was authorized. ये हम दूसरे नंबर के में आएंगे. It was agreed that he would draw only up to 6500. इसमें पैराग्राफ 12 देखिएगा सर, स्पेसिफिक यही इशू था. अच्छा 12 देख जी. इसके फैक्ट्स की केवल एक लाइन बताना चाहूंगा सर. ये योर लॉर्डशिप में काइंडली जस्ट सी पैराग्राफ 7 में लोड 7 ऑफ द जजमेंट. जी हाँ 7, ये जो सीताराम राइस मिल था इसके मिडिल में देखिएगा सर. ये फैक्ट्स डील किए थे. देयर वाज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलिंग स्क्वायरली विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126 ऑफ द एक्ट. इन द डंप रिपोर्ट डेटेड so it was stated there was an unauthorized use of electricity and maximum demand had been consumed up to 142. Now in this, my lord, the demand your lordship would find just above paragraph 6, my lord. Your lordship would find the category deals with the contract demand 99 kVA and above, but below 110 kVA. So the maximum limit in this case, Sitaram Rice Mill was 110 kVA, or what was drawn was 142 kVA. Now your lordship, in view of this, may kindly see the question frame, my lord, paragraph number 12, my lord, just below that, question for determination. And this on the foot of it, my lord, paragraph where the paragraph 12 start, question number discussion on merit, my lord. Number 1, wherever the consumer consumes electricity in excess of the maximum of the contract connected load, would the provisions of section 126 of 2003 Act would be attracted on its true scope and interpretation, my lord.
Now, Your Lordship, may kindly see paragraph 44, my lord. 44, my lord. The unauthorized use of electricity in the manner as is undisputed on record clearly brings the respondent under liability and in blame within the ambit and scope of section 126 of the 2003 Act. The blame और ये फाइनली 87 में कहा है 87(1). इतना 160 146 126 6 फिर बी है another bracket 4 की जगह 2 लिखिएगा Roman 2 छोटा वाला full stop. This aspect has been formulated by the Supreme Court in para 12 1 in the following terms within inverted commas 12.1. Wherever the consumer consumes electricity in excess of the maximum of the contracted load, comma, would the provisions of section 126 of the 2003 Act be attracted on its true scope and interpretation? Question mark. Answering this in para 44, question mark, inverted commas closed. Next para. Answering the aforesaid in para 44, it is held as under, within inverted commas 44 dot, the unauthorized use of electricity in the manner as is undisputed on record clearly brings the respondent within double inverted commas under liability and in blame inverted commas close within the ambit and scope of section 126 of the 2003 Act. Full stop. The blame is in relation to excess load, while the liability is to pay on a different tariff for the period prescribed in law and in terms of an order of assessment passed by the assessing officer by the powers vested in him under the provisions of section 126 of the 2003 Act. Full stop, inverted commas close. दो पैराग्राफ्स और है साहब. हाँ आ रहे उसी पे आ रहे हैं. 71, 72 और 87 का एक. In para 71, 72 and 87.1 it is held as under. Copy कर दीजिएगा. Full stop. Thus it is evident that the appellate authority failed to appreciate the law on the subject, and the order of the appellate authority cannot be sustained in the eyes of law in view of the judgment of Supreme Court in South Court. Stop. Therefore, impugned order is set aside. Petitions are allowed. अभी तो इसको कर लीजिए, इसको 4:30 बजे ले लेंगे, 5 बजे तक बैठ जाएंगे. क्या करना कुछ बचा है क्या? Prima facie seen it's a false case. क्या हो गया? Prima facie, but after reading the pleadings, it is seen that it's a false case. It's a false case लग रहा है मुझे. हाँ. इसमें सब इसमें क्या है? आपसे पूछा कुछ बचा है क्या? बचा तो है, मेरिट में डिसाइड कर दें आप इसको. इसमें इतना ही था इसमें कि we take a policy on 18/3/2019. Yes. And 14/3/2019 two policies. 18/3/2009 and 14/3/2009 and 18/3/2009. ये अलग दो पॉलिसीज ली थी. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो आपकी मृत्यु कब हुई? 29/4 29/4/2009. 29/4/2009. सप्रेशन का होगा, सेक्शन 35 से 8 होगा. 35 ही है ना. सप्रेशन में जो हमने डिक्लेरेशन किडनी का छुपा दिया. 35 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट है ना. इन्होंने ये ग्राउंड 35 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस वही कहा होगा, वही लॉ है. जी इन्होंने लेकिन
सर्टिफाइड नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश अरे किए भाई हमारे 35 ही लगता है भाई. A policy can be called in question within 2 years of its issuance if any declaration is found to be incorrect. यही लैंग्वेज है ऑलमोस्ट इसकी. यही है बस, है इतना ही है इसमें. इतना ही है ना जी. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पहले के हैं. नहीं 2 महीने पहले के हैं. ये कुछ और है भाई. Forty five. देख के लिखा दूंगा. ये तो 2021 का अमेंडेड एक्ट, इसका पुराना देखना पड़ेगा. तो इसका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पुराना निकालिएगा. ये तो 2021 में अमेंड हो गया है. ठीक है. हर्ट डिसमिस्ड लिख लीजिएगा. हर्ट श्री ब्रजेश रावत, आशीष रावत. The control next para. Petitioner's case is that the Life Insurance Corporation of India, by order dated 3/9/2009, repudiated the claim in case of death of Shri Rohini Prasad. Anil. Eh? Anil. Anil Kumar Rai, who had taken 2 insurance policies on 14/3/2009 and 18/3/2009, namely Jeevan Saral and Anmol Jeevan, and had paid the premium. Full stop. It is submitted that he died on 29/4/2009, and therefore कहाँ है इनका letter of rejection? P10 बनो. P10. And thereafter page 25. हाँ. The the claim was rejected. Full stop. It is submitted that order of rejection dated 3/9/2009. जी 3909. 3/9/2009 does not disclose any reason for. इसमें लिखा है ना आपको अलग से पंजीकृत एडी डाक से प्रस्तुत किया जाएगा. वो कहाँ है? वो नहीं दिया. रिप्लाई में भी उन्होंने हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स लगाए. Full stop. The reason mentioned in the reply is that the petitioner's son was suffering from kidney failure disease much prior to taking the policy, and thus there was suppression of material fact while filling the proposal for obtaining the policy. Full stop. In support of their contention, respondents enclosed copy of document annexure R2, which was a treatment paper from Central India Kidney Hospital, Jabalpur, showing his admission in the hospital on 20/2/2009, and also showing that he had undergone dialysis, etc., a fact which was suppressed by him while filling the proposal form. Full stop. Taking these facts into consideration and looking to the law laid down by Supreme Court in dash dash, इतना लाए जजमेंट नहीं लाए. आपके खिलाफ क्यों लाएंगे आप? इतना petition is liable to be dismissed as there is violation of the provisions contained in section dash dash of the Life Insurance Corporation of India Act. ठीक है ना?
है? बस पिटीशन फेल्स एंड डिसमिस। रफ ड्राफ्ट करिएगा, इसमें निकाल के लिखा दूंगा मैं आपको। मिला आपको एक्ट मिला क्या? दिखाइए ना। I was sitting not, I'm very sorry. आपकी क्या असिस्टेंस है बताइए थोड़ा सा। 129। हाँ 129 ही तो कर रहे हैं, बताइए ना। सर इसमें मेरा यही कहना है, इतने डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ये 2013 का है एंड ऑफ फैक्ट एक से रुक जाए यार। not proper to be raised in a writ petition. Consumer forum is the proper remedy. Nevertheless, I have filed a reply on merits showing that the petitioner has given false information about the death of. देखना इंश्योरेंस एक्ट भी अलग से है कैसे? हाँ निकाल लाना। लिखा दे चैम्बर में दे देना, लिखा दूंगा मैं। ठीक। He was suffering from a serious. ठीक है लिखा दिया वो, इनका नाम डाल दीजिएगा। लेटर ऑन श्री एनएस रूपरा अपीयर्स फॉर LIC। चलिए नेक्स्ट केस। In review of Hon'ble Court order, dated 30 and 10th, we have filed the affidavit of Collector Patna, whereby the Hon'ble Court directed to Collector to either he placed on record the order of any superior court whereby inquiry report of sub-regional officer has been set aside. Number 2, if it is not stayed or set aside, then copy of FIR. Number 3, the voucher by which recovery amount as proposed by sub-divisional officer has been deposited in the government treasury. मतलब इसमें हमारी संविधान रही है, मतलब annexure R1 जो लगाया already we have filed annexure R4. The receipt is already on record, my lord, and they have responded number 8, 7 and 9 because respondent number 8 died. 7 and 9 held responsible. It is mentioned the affidavit para 12. रिटर्न में? नहीं अभी जो हमने affidavit फाइल किया उसमें भी मेंशन किया है। So the deponent humbly submitted that the amount rupees 37,926 was already recovered from the respondent number 7 and 8, which is evident from receipt dated 19 March 15. This receipt already annexed along with the written which is filed in the year of 2015. रिकवरी कितने की थी? 3,05,000 की थी। They are held responsible by the authority for rupees, my lord, in amount. इसमें हमने पैरा 10 में मेंशन किया है कि इसमें जो पॉइंट नंबर 5 and 6 my lord टोटल इनकी जो रिकवरी आई है वो 37,000 आई है। और जो पेज नंबर 8 देखें सर, पेज नंबर 8 में एनेक्चर D2। अब FIR भी करा दिया आपने हमारे बोलने पर 2/11/2023 को जी। तो इसमें जो उनकी रिकवरी आई थी सर, वो हमने से इनका रिकवरी उसी समय हो गई थी। FIR अभी हुई। After reading affidavit of the collector, आगे कलेक्टर है ये पन्ना श्री हरजिंदर सिंह, wherein it is mentioned that recovery of rupees 37,926 was made from the respondent number 7 and 8 by receipt dated 19 March 2015, and now on 2/11/2023 FIR has been lodged registering case crime number 294/2023 for the offences punishable under section 417, 420, 34 IPC at police station Dharampur, district Patna, against the accused, namely Mahbub Khan, that is respondent number 9, and Shiv Kali Prajapati, that is respondent number 7, does not wish to press this petition any further. He submits that now he will pursue his remedy before the IO by furnishing necessary documents to show that how fraud was perpetuated, how cheating and fraud were perpetuated by the private respondents. Next para. In above terms, petition is dismissed as withdrawn with the liberty to pursue his remedy before the appropriate criminal court. Union of India. Union of India क्या? Union of India। हाँ होगा। आपके क्या इंस्ट्रक्शंस? आपने पिछला टाइम दिया था इंस्ट्रक्शंस सीख करने। आपने मुझे ये कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलो, SILO, सीलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट?
सर मैं देखा उसमें इट्स ए टॉल टावर और पिट ऑन ए फॉर्म यूज्ड टू स्टोर अ ग्रेन, ये उसका मीनिंग है। क्या आज क्या होना है इसमें सर अब मैटर क्या है ये? इनफैक्ट व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस? आपने पिछली बार बोला था। कोई सर है मतलब देयर इज एन एंटी मॉडल पास इन माय फेयर बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट माय लॉर्ड। हाँ, डेटेड 27/1/2020। मैरिट्स पर बताइए। हाँ जी। So the petitioner, he was, the company was engaged in the business of export of soybean products. Petitioner under the exempt policy 1992-97 as amended on 91. Who is appearing for respondent number 3? Shri Rajesh Mangiratta for the petitioner, none for respondent number 2 and 3, though their names are reflected. Name कहाँ name of Deputy Solicitor General is reflected in the cause list. Full stop. It's a serious matter that Union of India has failed to send its counsel to appear before the court. Let SPC be sent to the respondent number 2 to depute a competent lawyer to assess the court. They will also take disciplinary action against the concerned lawyer for not appearing before the court despite mention of the name of the counsel for the Union of India. Let disciplinary action taken report be also furnished list in the week commencing 4 December 2023. IR if any to continue. Lordship, on the last date of hearing, Millards, Lordship had directed to reflect the name of Mr. Siddharth Sharma. Lordship, however, Millards, Mr. Sharma won't be appearing in this matter since Millards, it is a conflict of interest. He is also a lawyer for Jabalpur Development Authority, Millards. He'll be writing a letter to the department to engage a counsel from Gwalior, Lord. That is not our problem. If you are not appearing, you plead no instructions, we'll proceed further. What you will be doing, that is your problem. And why you have not done it since... We came to know about this order today itself, since it was reflected in the cause list. आप किसके लिए आ रहे थे इसमें? Not for the income tax department. The name was reflected. Income tax department तो उसमें पार्टी ही नहीं है. Party. Well, that was after amendment, my lord. Amendment incorporate क्यों नहीं किया गया अभी तक? Amendment incorporate क्यों नहीं हुआ? Was incorporated on 13/4/2015. लिखिएगा amended copy of amended petition is not uploaded. Shri Shubham Manchani submits that he has instructions to inform that Shri Siddharth Sharma, being a standing counsel for Jabalpur Development Authority, has conflict of interest. He cannot represent both Jabalpur Development Authority and the conflict of interest, and therefore he will not be appearing for respondent number 2. Full stop. श्री मंचानी कब बने थे ये इनकम टैक्स के वकील? In the month of February. Shri Manchani admits that Shri Siddharth Sharma was made a counsel for Income Tax Department in February 2023. Full stop. Almost more than 8 months time has lapsed. He should have instructed Income Tax Department to take action. Let Commissioner Income Tax Napier Town Jabalpur appear in person to assess the court. Miss tomorrow. Lord, if I may summon, we came to know about this case today itself. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप फाइलें देखेंगे नहीं तो क्या होगा? कल इनकम टैक्स कमिश्नर को बुला लीजिएगा, वो असिस्ट करेंगे. लिस्ट टुमारो. जिस समय वो आपको पेपर देके गया तो फाइल देके गया होगा ना? नहीं ये तो इसका है, बाकी टेस्टों का. In view of such situation, list this case tomorrow. Especially looking to the fact that तब तो बात समझना आती है. उसमें तो अशोक से पूछिए, अशोक देगा. on 16/10/2023, तो भैया तो किसी ने आपसे मना किया? his name was directed to be reflected in the cause list.
तो मैंने कहा था जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसके रेजोल्यूशन बनाइए, चलिए नए रेजोल्यूशन पास होंगे। none for the petitioner. By way of as nobody is appearing for the petitioner, petition is dismissed for want of prosecution. But in this case, the petitioner number 2 died, and the other petitioners are not interested to prosecute the. देखिए श्री अखिलेश जैन submits that petitioner number 2 has died. Other petitioners are not interested in pursuing this writ petition. Accordingly, same is dismissed for want of is dismissed as not pressed for by the counsel for the petitioners on instructions of the surviving petitioners number 1 and 3. चलिए. Number 135, Vivek Agarwal. Lord, I'm praying for short adjournment, my lord. Why? Lord, Shri Organ Council is not available today. जी. Shri Saket Agarwal is not available today, my lord. लिखिएगा श्री साहब, नाम बताइएगा आपका. Shri Shubham Mishra, my lord. श्री शुभम मिश्रा submits that arguing counsel is not available today. List next week. List immediately after Deepavali. Obliged, my lord. Number 130. ये पिटीशन जी ये अनिज्ञत P1 में लॉर्ड साहब हमारा 87,906 रुपए जोड़ के पिछला किसी 2007-9 का 17/6/2009 का इंस्पेक्शन है अनिज्ञत P। क्या है, क्या पिटीशन क्या है? पिटीशन लॉर्डशिप ये है कि हमारा जो हमारे पास मीटर है, आटा चक्की चलाते हैं हम, मीटर लगातार देते आ रहे हैं। अचानक साहब हमारे P1 के द्वारा 2010 में उसके लिए डायरेक्ट पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में? हमको कोई सोगाज नोटिस नहीं दिया। वो नहीं है, आपको सब गलत किया उन्होंने, उसके खिलाफ ये दिस इज अपीलेबल ऑर्डर। अगर आपका असेसमेंट किया है उन्होंने, आपको उससे संतुष्ट नहीं है तो धारा 127 में अपील होती है उसकी जी। हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अपील की लिबर्टी देखिएगा, प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन with liberty to avail alternative statutory remedy of appeal as may be provided, of alternative statutory remedy as provided under the Electricity Act 2003. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. कुछ बचा है क्या इसमें? लिखिएगा, none for the petitioner. It appears that with passage of time this petition is rendered infructuous as the duration for which fisheries lease for which lease of tank Sagona Sagouna Katni was leased has already come to an end. Petition is dismissed for want of prosecution. Interim order, if any, shall stand vacated. Lord, it has to be heard finally. Pleadings are completed. तो फिर बताइए, Any date may be given. लिखना पड़ेगा। You are not prepared with the matter. लिखिएगा, Prepared है, but will take- for the petitioner, assisted by Shri Prabhat Shukla. Shri Kapil Jain is not ready with the matter and submits that matter is to be heard finally. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. As learned counsel for the respondents is not ready. चलिए, IR to continue. IR if any Short date. machine. आपका तो IR चल रहा है, आपको क्या शॉर्ट डेट की जरूरत है? इनका कंडक्ट आई गया रिकॉर्ड पर।
Serial number 100. Lord, I'm praying that kindly this matter be taken up in Passover round. पासओवर क्या होता है मैडम? टाइम देख रही हैं आप? Lord, then this क्लियर matter. करने के पहले तो समझना चाहिए। Lord, my senior has to argue this matter. क्या करें? आपके सीनियर को कहाँ लेने जाना है? Lord, he's arguing in front of. आप तैयारी करके आना चाहिए। Lord, I'm prepared with the matter, but I'm not having. Prepared, then let him start. Let him start. But the dispute is with regard to transfer of LPG customers from respondent number 4 to the petitioner. नंबर ज्यादा हो गया तो इसलिए एक्सेस में कर दिया ट्रांसफर। नहीं मैं ट्रांसफर मांग रहा हूँ उनसे। अच्छा, मांग रहे हैं और दे नहीं रहे हो? जी। No. So the matter, this is strictly between you and company. No, it's governed by the policy of central. वही तो कंपनी की पॉलिसी होगी ना, इसमें क्या लिखा है? तैयार हैं आप अधिकारी साहब की? He is my dealer actually, so we are supporting him. He is seeking transfer of cylinders from HPCL dealer. HPCL dealer, and he is Indian Oil dealer. Indian Oil dealer. So there's no relief paid against me, but he is my dealer, so he has made me. हाँ ठीक है, तो इंडियन ऑयल को भी पार्टी बनाया है क्या? इंडियन ऑयल से किस पॉलिसी में? पॉलिसी है कि इंडियन ऑयल से HPCL ट्रांसफर करने के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ है वो पॉलिसी? एनेक्शर P1 पेज and P2 पेज 11 and 12। क्या देखना क्या? P1 P2? सर P1 से देखें। हाँ, क्या लिखा है इसमें? जी सर। It has come to the notice of government that in many parts of the country, several old LPG distributors are still operating their extension counters in the trading area of newly commissioned LPG distributors, and therefore the newly commissioned dealerships are finding difficult in enrolling new customers, resulting into making such new distributorship unviable. एक सेकंड वेट करिए। तो यहाँ बताइएगा कि इनकी ये एक्सटेंशन काउंटर चला रहे हैं क्या आपकी यूटिलिटी में? हैं? जी। ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? What had happened after this? It was recommended that customer should be transferred to me. That time, the respondent number 4 initiated arbitration. The arbitral award was decided against him. His claim was rejected. 34 was rejected. Then 37 appeal before this honorable court. They withdrew it on the ground that in 2007 now a circular has come which says that customers are not to be transferred. So if I am successful in convincing my lords that in that interregnum period rights accrued to me. ये आने दीजिए, इनको सुनेंगे नेक्स्ट वीक लगाइए। श्री जयदीप चिरपुरकर फॉर द पिटीशन। मैडम आपका शुभ नाम बताइए। आकाशमी त्रिवेदी। मिस आकाशमी त्रिवेदी फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 4। 2 and 4। श्री आदित्य अधिकारी लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री सिद्दीकी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 3। As counsel for the respondent number 2 and 4 has difficulty in appearing, cases that don't list in the week commencing 28 November 2023. Published. Serial number 143. Seen adjusted file 3 for आपका शुभ नाम बताइए। आवेश सिंह। आवेश सिंह submits that counsel is adjusted. Case is already admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Serial number 131. Lord, I am praying for a short time, my Lord. Why? Sri Himanshu Chaurasia, my Lord, he used to come from Chhattisgarh, Chhatarpur, my Lord. He could not came today, my Lord. The brief is with him. Shri Siddharth Patel. Siddharth Patel prays for time as arguing counsel is not available. Petition is already admitted. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Bless me. Lordship, what happened in this case, Lordship? One Kamlesh Verma had taken auto loan from the respondent bank. जी. Lordship, he failed to refund the loan amount to bank, and thereafter, Lordship, the respondent bank has served the notice to the petitioner. आप क्या गारंटर होंगे उसके? फिर यहाँ क्या करेंगे रिट में हम? Lordship, I am only seeking directions that कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने? आप देख लिया हमने?
You are seeking directions that it should be first recovered from the borrower. हाँ, ऐसा कहाँ प्रावधान है? Sir, it is not. They can recover it, leaving the borrower directly from the guarantors. ये फर्जी पिटीशन कब तक चलेगी? 13 साल से पड़ी हुई है हाई कोर्ट में. इसका ना सर है ना पैर है, तो पहली तारीख को खारिज हो जानी चाहिए थी पिटीशन. Under which provision of law you can seek a direction against the bank that they should not recover their loan dues from a borrower? कानून बताइए. आपने तो इसको 10 साल यहाँ पर कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है. I am not seeking that he may not recover from me. नहीं, I have understood. I have read it. Your plea is that it should be first recovered from the borrower and then if any amount is left, then it should be recovered from the guarantors. ये है आपकी प्रेयर, यही है ना आपकी? हाँ, तो बताइए ना, कुछ कानून तो बताइए हमको, क्योंकि हमें जो कानून मालूम है वो तो उल्टा कहता है. They are not duty bound or obliged to recover it from the borrower directly. They can recover it from anybody. कुछ कानून लाए तो बताइए, नहीं तो इसको खारिज करें. अभी टाइम नहीं देंगे. My request is that Lordship, they may auto rickshaw which was auto loan which was taken. तो हमारा काम नहीं है. Lordship, I have read the section 13 and 14 of SARFAESI Act. हाँ, पढ़िए section 13, 14 There was no provision that कि हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट किसी से भी कर सकते हैं. फिर खत्म हो गया बात. लिखिएगा तो इसको विड्रॉ करेंगे आप पिटीशन को. लिखिएगा, आपका शुभ नाम बताइएगा. मोहम्मद इरफान. श्री मोहम्मद इरफान, after arguing for some time, fairly admits that the action of the Punjab National Bank in making recovery from the guarantors is in consonance with the provisions contained in section 13 and 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. And therefore, petitioner's prayer for directing the bank to recover the amount of loan from the principal borrower and then only advert to the guarantors is not made out. In view of such fair admission, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. Sir, I am prepared for adjournment for the kindly list after 1 week. क्या हो गया? सर सीनियर का स्वास्थ्य खराब होने का आए नहीं. आपका शुभ नाम बताइएगा. कुलदीप दाहिया. श्री कुलदीप दाहिमा submits that arguing counsel is not keeping good health. क्या नाम है उनका arguing counsel का? देवाशीष साकलकर. श्री देवाशीष साकलकर is not keeping good health and prays for adjournment. On his request, case is adjourned. List for final hearing in part B of the cause list. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. Number 144. My lord, My file is missing, my lord. I requested in the morning session, my lord. लिखिए, आपका नाम बताइए. RP मिश्रा, my lord. श्री RP मिश्रा submits that his file is missing. आपका तो नाम ही नहीं है इसमें. My lord, PN पाठक, RP मिश्रा, my lord. उसमें PN पाठक, शैलेंद्र सिंह, दिनेश कुमार दीक्षित, प्रणय चौबे, आनंद मोहन शुक्ला. I am associated with the Mr. Pathak, my lord. My power is there, my lord. इसमें नाम नहीं है. खैर, anyway. My lord. इसमें स्टे है क्या? my lord, मेरे पास फाइल ही नहीं है. अच्छा. my lord, उसमें मेरे कोई जानकारी नहीं है. बहुत अच्छी बात है, हम देख लेंगे. my lord. मॉर्निंग में प्रेयर किया था मैंने. ठीक है, आपने अपनी मेहरबानी करी. my lord. हाँ, 2010 से स्टे है, इसलिए फाइल नहीं मिल रही है आपकी. That is not. परसों ले आइएगा. परसों टॉप ऑफ द लिस्ट लिखिएगा. Submits that file is not available. There is interim order in favor of the petitioner since 13/9/2010. Full stop. It is unfortunate that counsel is not coming with his file. He may reconstruct his file list on 8th November 2023, top of the list.
with clear stipulation that no request for passover or adjournment will be entertained. My lord. Matter may be heard along with WP 3639 of 2010. It's a connected matter, and relying on that order passed by that relief was also granted. लिखिएगा लिस्ट along with number लिख के दे दीजिएगा जी चलिए My lords, this petition stands in fractures, my lord. देखिएगा मिस आपका शुभ नाम बताइए Udita Mehendi Ratta. Udita Mehendi Ratta submits that with passage of time this petition is rendered infructuous. Accordingly, same is dismissed as infructuous. Miss Akashmi Trivedi for Respondent number 2. respondent number 2, Shri Siddhant Kumar Jain, respondent number 4 and 3. Siddhant Kumar Jain for respondent number 4 and 5. 3, sir, 3. 3, 2 and 3. Shri Amit Sharma, learned government advocate for the district magistrate. Chaliye. This relates to wrong recording of date of birth in the class 10 certificate of a student. Now, we give a representation also to the ICSE board. The board has said that there is a time gap of 1 year within which you do it. Otherwise, you have to get an order from the court to do it. तो कोर्ट का तो डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा आपको कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट से तो मिलेगा नहीं यू विथड्रॉ इट ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट दैट यू But your lordship, kindly see, my lord, in this, even the date of birth from the hospital where he was born. you'll have to take a declaration from the does not mean high court. Court means trial court which will issue a declaration that what is your correct. How can high court conduct an inquiry that whether this certificate, birth certificate issued by the hospital is correct or not? You will have to file a suit for declaration. You will have to examine the doctor or the hospital person to demonstrate that whether that record is correct or not. Evidence would be required. Evidence will be required. So obtain a declaration. इसको 14 साल तक क्यों रखी गई है पिटीशन हाई कोर्ट में? This has been listed after 2011. अरे वो तो ठीक है हम तो पहले दिन ही इसको खारिज हो जाना चाहिए था अगर हम 2010 में होते तो हम पहले दिन ही खारिज कर देते इसको सर इसमें सर जो सवाल पूछ रहे हैं इररिलेवेंट थोड़ा ना है ये नहीं सर नहीं तो अब जाइए इसको विड्रॉ कर लीजिए डिक्लेरेशन सूट लगाइए लिखिएगा श्री अजय ओझा प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन एज ही प्रपोजेस टू फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन to declare his date of birth, to obtain a declaration in regard to his correct date of birth. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. Declaration के लिए कहाँ limitation आएगी रिकॉर्ड आपको? 3 साल वाली सर. तो यहाँ लगाइएगा एप्लीकेशन द टाइम विच इज स्पेंट फ्रॉम 2010 to 2023 ठीक है लगाइएगा वहाँ आवेदन. नेक्स्ट केस. Application pending for the bringing the NPR and the क्या है ये? petitioner has died. The application is to filed by the legal representatives of the petitioner in the court. Legal representatives को रिकॉर्ड में लाने के लिए अपील जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को रिकॉर्ड में लाने के लिए एप्लीकेशन मांगे पार्टी के रूप में फाइल कर दी है आपने? फाइल कर जमा कब है? लिखिएगा हर्ड ऑन IA 1037/19 an application for bringing the legal representative of the petitioner on record. Same is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 working days. List thereafter. मतलब इसमें एप्लीकेंट नंबर ये जो एक है मुन्नी भाई ये भी एक्सपायर हो गई है अभी तो सिर्फ 2 3 4 5 के लिए कर दीजिए. जो भी करना है करिएगा. ये जो है वो करिएगा. चलिए. ऐसा Three days time lordship for correction of the cost title lordship. Gotham Place for time to correct the cost title lord. list.
thereafter in part B of the cause list for final hearing. ये शोकॉस नोटिस के अगेंस्ट में आए हैं इसलिए हाँ Petition is admitted, Lordship. नहीं तो शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट आए तो उसके खिलाफ पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? वही मैंने कहा है कि अथॉरिटी हैज ओनली इशूड अ नोटिस दे मे सबमिट दोस एप्लीकेशन फाइनल हियरिंग मत कीजिए, इसमें लिखिएगा श्री जेके पिल्लई raises an objection that petition under against a show cause notice is not maintainable. Full stop. List on 8 नवंबर 8 को ना करेंगे, क्यों क्या हो गया? एडजस्टेड तो 9 को लगा देते हैं on 9 नवंबर ये दिवाली के बाद नहीं थी जल्दी 9 को लगा छोटा सा मैटर है, खत्म करें इसको 8 on 9 नवंबर टू पॉइंट आउट फर्स्ट टाइटल अमेंड करना पड़ेगा। कर लीजिए ना, कल जाके कर लीजिए, उसमें आपको कौन सा बहुत बड़ा काम करना है? आप लोगों का ये हो गया है कि हाई कोर्ट में केस ये इन केन प्रकार पेंडिंग रखो। एडमिटेड पिटीशन। हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट ऑन 9th टॉप ऑफ द लिस्ट, जजमेंट ले आइएगा आप शो कॉज नोटिस के खिलाफ। Your Lordship, in this case, pleadings are complete. The municipal council issued a notice inviting tender. Your Lordship, municipal council Mangama is स्टे है क्या? स्टे है सर, स्टे है, स्टे है, इसमें पदेशन पे है, स्टे है सर। हाँ तो फिर सुनिए ना, फिर सुनाइए। फिर वो उनके वकील ने सर इसको कोई डेट उनके वकील के लिए क्या करेंगे? हम ढूंढने जाएंगे क्या उनके वकील को? इसमें सर आपको अपना केस प्रमाणित करना है, उनका वकील नहीं आ रहा, उसको ढूंढना जाएंगे हम। आज हमारी फाइल मिसप्लेस हो गई। ऐसा बोलिए ना, डायरेक्ट बोलिए फिर। कोई डेट दे दे। दिलीप पांडे सबमिट्स दैट अरुण पांडे दिलीप पांडे सबमिट्स दैट he has misplaced his file list on 9 November 2023 top of the list। या कि सर मैटर इज पेंडिंग बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कर सकते हैं? योर लॉर्डशिप में डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड द केस बिकॉज़ at this stage वो डेट कर दी। Shri Pandey submits that his only prayer is that matter is pending before the state has filed reply in his state website. State government be directed to decide the matter expeditiously. 15 दिन 60 दिन if not already decided, ठीक है? This court has not expressed any opinion on the merits. Until then I have to continue. चलिए अब मेंशन केसेस ले लीजिए। नंबर 37 काउंटर साइन ऊपर पड़ना, काउंटर साइन वाला ऑर्डर कर देना इसमें। चलिए नंबर 30 सेम ऑर्डर नंबर 30। My lord, in this case, annexure P3 at page 15 is under challenge, your lordship, whereby the temporary permit has been granted to the private respondent. कब से कब तक है उसकी वैलिडिटी? जी सर, इसकी 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी है। नोटिस इशू करके सुनते हैं। जी नोटिस टू द रिस्पोंडेंट on payment of PF by registered AD post within 3 days, returnable 4 weeks, list in the lead commencing 4 दिसंबर 2023। नंबर 48। Your lordship, this is a case of wholesale remand by the first appellate Raise 1 week time to file reply to the stay application. Shri Amit Sahani, learned counsel for the appellant, May I make a Manoj submission? Kumar Sanghi। The trial is already going on. If they seek time, they only 1 week time। आज पहली बार लगा है, दिवाली के जस्ट बाद लगा देंगे इसको। जी दिवाली में उनकी भी छुट्टी रहेगी सिविल कोर्ट की। Praise to file reply on his request, week's time is granted to do file reply list on 30 नवंबर 2023। reply be filed on or before sorry 30 नवंबर नहीं, I'm sorry, list on 24 नवंबर 2023। reply be filed on or before 21 नवंबर 2023 in the registry। चलिए It's a very small matter regarding land acquisition. They were on caveat. They have filed their reply. The only question is, my lord, under 24,
they say the award was not within that 5 years. And the collector, my lord, they moved an application for giving the land back to the original owners. That has been allowed, my lord. We prayed for stay also of the order. They were on caveat, so they were granted. असल में नहीं दिया तो जो है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपको 2013 के एक्ट में कंपनसेशन देना पड़ेगा इनको। कंपनसेशन तो दिया गया सर, और आप सिर्फ धारा 24 देख लें, इंदौर डेवलपमेंट पूरा लगेगा, वो एंड पढ़ा जाएगा सर उसको। उसको देखेंगे आज तो नहीं सुन सकते, कल परसों कल परसों नहीं, अब छुट्टी के बाद। सर हमारा ये है उसको स्टे के लिए, हाँ फिक्स डेट दे देंगे आपको, लिस्ट स्टे कर दें सर, इन लोग ना वो कर दें लिस्ट दिस केस। सर आज आपकी फिक्स डेट पे ही था मेरा, स्टे सुन ले, 23 स्टेटस को कर दें। Till then parties shall maintain status quo in regard to the land in question. Much obliged. May I please, Your Lordship? Your Lordship, the present petition has been filed aggrieved by the order dated 27/9/2023 of the respondent authorities, wherein Your Lordship, I have been declared, the petitioner firm has been declared the willful defaulter, Your Lordship. Now, Your Lordship, to the respondent of PF for registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. Your Lordship, I am also pressing on the interim. Prayer for interim relief will be considered after reply of the respondent bank is received. Chaliye. Obliged, my lord. I am seeking 2 weeks time to file it. None for the petitioner. Shri Chaturvedi prays for and is granted 2 weeks time to file reply list after 2 weeks. Obliged. और मैं फॉर्म 10 फाइल कर देता हूँ और उसे रिटर्न करता हूँ, लेकिन अगर मेरी बुक्स में है वो प्रोवाइड होने से रह गया। 2 piece, 67 for in that case, my lord. 67.1 in jury case. My appeal is, owner's appeal is also there, my lord. It will take time, my lord. Pay and recover का order है। तो छोटा सा ग्राउंड में बता दीजिए क्या पे एंड रिकवर किस ग्राउंड पे किया है? LMV light motor vehicle का driver was holding light motor vehicle and flying the commercial vehicle. इतना यही point इस point पे वो तो जो है मुकुंद देवांगन से कवर हो जाएगा, पे एंड रिकवर हट जाएगा। इससे नहीं तो आरसी बुक में ये देखना है अनलिमिटेड वेट कितना था, 7500 किलो से ज्यादा था, कम था, ज्यादा है तो वो LMV है ही नहीं। हाँ फिर हम बाहर हो जाएंगे, बस उतना देख, और मल्टीप्लायर भी गलत है। अरे वो तो कर देंगे भाई, वो तो सब सही कर देंगे। आरसी बुक में है नहीं पोजीशन में, उसमें अनलिमिटेड वेट में सही रिकॉर्ड दिखाइएगा। बात नहीं है कि नहीं साहब अगर बुक्स में नहीं पढ़ा है। जब हमने सुबह 2.25 घंटे ओथ में भाग लिया आपकी, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपको जल्दीबाजी हो रही है। मेरा व्यू था, मैंने कहा कि आपसे मैं पूछूं कि ऐसा है क्या, कोई खास बात? आरसी बुक में क्या लिखा है दिखा दीजिएगा उसका। एक चीज और बताइए, ये अभी जैसे इस बार आया था कि भाई व्हाटएवर डोनेशन है ना, तो उसी में सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस, जी सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओनर ऑफ द व्हीकल। हाँ हाँ, 15% पेज नंबर मैन्युफैक्चरिंग टेल्को लिमिटेड, अनलेडन वेट 7800। माय लॉर्ड 7800 ठीक है, 7500 से ज्यादा है। 13400। अरे भाई उससे लेडन का क्या करना है? LMB की डेफिनेशन में तो अनलेडन वेट है ना जी। इनके क्लेम में मानो दूसरी बस वाले का नाम दिया है, पेज नंबर अवार्ड के पेज 11 में देखेंगे आप। हाँ। आपका वो तो गया, मुकुंद देवांगन तो गया, वो तो 7500 नीचे वाला। अब क्या देखना है? पेज 11 में मानो, पेज 11 ऑफ द अवार्ड, ऑफ द अवार्ड देखते हैं, अवार्ड भी देख लेते हैं आप। 15 हाँ सेकंड पैरा, हाँ पैरा 11 बोल रहे हैं ना, पेज 11, पेज 11 अवार्ड का पेज 11 जी, अवार्ड का पेज 11 A1 पेज 11। हाँ पढ़िए। इसमें इन्होंने जो प्लीडिंग की थी, पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ है 11 में फर्स्ट लाइन में, ये इसमें इनकी जो एप्लीकेंट की प्लीडिंग थी इसमें वाहन न्यू स्टार बस क्रमांक आ रहा है, रियर सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस। गाड़ी का नंबर तो MP09FA है ना जी, 1429 उसमें। ये गाड़ी का नंबर देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। वो सिर्फ
85% MA09FA 1429 का आपको MP09 MP09 FA 1429 यही तो है। रजिस्ट्रेशन में ओनर्स का नाम, ओनर का नाम सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक है, मल्टीप्लायर्स में हायर है। हाँ ठीक है, बता दीजिएगा। अब बताइएगा, चलिए डेथ केस बताइएगा पहले। तो बाकी 15 का क्या होगा? मैंने This is for 15 years student, my lord. 15 ईयर? Yeah, my lord. This is the calculation. कितना दिया 15 साल में? Date of accident, my lord, is 12/7/18. 12/7/18, हाँ। 10th class student. हाँ। As per my lord judgment, my lord. ट्राइब्यूनल ने कितना दिया है? 8,26,000. हाँ। This is the calculation, my lord. बताइए कितना मल्टीप्लायर लगाया आपने? 18 के लगेगा। 18 का कैसे लगेगा? 15 साल। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ एक्सीडेंट तो हो गई 12/7। डेट ऑफ बर्थ 4/5/23। 4/5 2003। 4/5/2003, तो 15 साल से बड़ा था जी। ठीक है। एंड डेट ऑफ एक्सीडेंट इज 12/7/18। ठीक है ना, लिख लिया। चलिए 15 का मल्टीप्लायर होगा। 15 का इसलिए नहीं लगेगा, 15 तक लगता है। उसकी उम्र 15 क्रॉस कर गई थी, ये इसीलिए डेट ऑफ बर्थ पूछा मैंने। 15 साल आए थे इसमें। अरे भाई वो तो 15 साल है, तो डेट ऑफ बर्थ को या तो आप डिस्प्यूट कर लीजिए। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/5/2003, कहाँ से मालूम पड़ेगा? एग्जिबिट P6। और 100 रुपए मैंने दिखा दिए खर्चे में कि दिस इज व्हाट आई हैव गिवन। मार्कशीट है उसकी। राम निवास जी 4/5/2003 है, तो 15 साल से ज्यादा था। 18 का मल्टीप्लायर लगेगा। 10th की मार्कशीट है तो। चलिए और क्या करना है? सेकंड इंजरी केस में एज पर अवार्ड में इंजरी ग्रीवियस इंजरी इन राइट लेफ्ट लेग ऑपरेशन वाज डन एंड वायर एंड फिक्सेशन। कितना दिलाया ट्राइब्यूनल ने? 5,000 मात्र 5,000 रुपए। हाँ, इंजरी का डिस्क्रिप्शन किस पैराग्राफ में? एग्जिबिट P11 एंड P25। P11 लेफ्ट टीबे में वायर का फिक्सेशन ऑपरेशन। एक से रुक जाइए। P11 डॉक्टर राजेश मिश्रा, कंसल्टेंट इतना ओम प्रकाश जी। तो आप उसमें अगर हिस्ट्री ऑफ इलनेस लेवल सिस्टमैटिक उन्होंने दिया था, उसके अंदर दिया था कि वेरियस ट्रस्ट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग फ्रॉम वन ट्रस्ट टू अनदर विदाउट incurring that expenditure on their objects, and therefore in order to curb that practice, क्योंकि वो क्या करते हैं ईयर एंड पे जाके जितना बचा उतना दूसरे उसको दे दिया और 100% उसका उन्होंने वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन ले लिया। तो टू कर्व दैट प्रैक्टिस दे हैव कम आउट। और इसके बारे में मेरी अपने P11 और से भी बात हुई। उनका कहना है कि P11 और P11 P25 P25 कि मैं इसका 85% ही आपको एप्लीकेशन दूंगा, तो 100 बाकी जो 15% है उसका क्या होगा? उनके हिसाब से कहाँ लिखना है डॉक्टर साहब की फ्रैक्चर किस चीज का है? फ्रैक्चर नहीं। अच्छा, फ्रैक्चर नहीं, फिर क्या? फिर वायर फिक्सेशन है, इंजरी है। अरे वायर फिक्सेशन किस चीज के लिए कर दिया भाई इन्होंने? ये तो समझाया हमें। जब फ्रैक्चर नहीं है तो वायर से क्या फिक्स करेंगे? वायर से क्या अरे भाई डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई FIR ना हो जाए, वायर से क्या फिक्स? बिल्कुल कंप्यूटेशन। हाँ जी, हाँ 85 जी, हाँ हाँ जी करेंगे जब फ्रैक्चर नहीं है तब। हाँ जी बाय दी हाँ claimants अच्छा and the owner of the offending vehicle respectively, full stop. MA00 being नहीं sorry full stop being aggrieved of award dated हाँ वो तो अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब full stop being aggrieved of award dated हाँ 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 बिल्कुल 12/3/2020 passed by learned 22nd additional motor accident claims tribunal Bhopal in claim की MCC number 479/19 and 480/19 respectively for the death of Ram Nivas
and injuries suffered by Shri Om Prakash. Full stop. Next para. As far as appeal filed by the owner is concerned, it is submitted that the offending vehicle MP09 FA 1429 curb that practice. is registered in name of Messrs Sadguru Transport Service. वो आपका application मानेंगे। Full stop. एक तरफ उन्होंने उसको रोक दिया। It is submitted that उन्होंने ये कहा the vehicle is LMV and driver was having license to drive a LMV, but mere absence of endorsement to drive commercial vehicle will entitle the owner driver to seek casting of liability on the insurance company in the light of the law laid down by Supreme Court in Mukund Devangan. Next para. As far as claimants are concerned, legal heirs of the deceased Ramnivas submits that date of birth of Ramnivas as per certificate issued by Government High School, Majidgarh, District Bhopal, MA JIDGARH, shows his date of birth as 4/5/2013. 4/5/2003. Full stop. Date of accident is 12/7/2018. Therefore, since deceased had crossed age of 15 years, multiplier of 18 will be applicable in the light of the law laid down by Supreme Court in Sarla Verma. Full stop. When minimum wages are taken into consideration, which as were obtaining on the date of the accident, even for any unskilled की लगाई है ना? नहीं, semi skilled की नहीं लगी। नहीं। ये आपके ही क्या 10वीं पास के बच्चे को? स्टूडेंट में सेमी स्किल्ड में। अच्छा चलिए। Wages for semi skilled person is applied, then those were to the tune of rupees applied, then compensation will be on the higher side. Next para. It is submitted that as per Exhibit P11, injured Om Prakash had undergone procedure of fixation of this has not come from close reduction of physial plate of left proximal tibia under C arm width with the help of gentle manipulation and fixed with two cross K wires inserted from medial and lateral side percutaneously. Full stop. Then knee joint effusion was aspirated with wide bore needle, pin track dressing done, distal neurovascular intact, and patient was shifted to ward in stable condition. But overlooking these facts, only a sum of rupees 5,000 is awarded in favor of Om Prakash. Next para. Shri. वो ये कहता है any amount credited or paid other than the amount referred to in explanation Ashish Vaidya and Shri. any fund or trust or institution or any साफ का नाम डालिएगा. or other educational institution Supports the impugned medical institution award and submits that no indulgence is Jayant Nikra supports the impugned award and submits that no indulgence is required in the matter. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, full stop. As far as appeal filed by the owner is concerned, that needs to be dismissed in as much as certificate of registration of the vehicle bearing registration number MP09FA1429 is available on record. According to this, the manufacturer was Telco Limited. Full stop. Unladen weight of the said vehicle was 7,800 kilograms. Full stop. It is more than 7,500 kilograms, which is the maximum limit for classifying a vehicle as LMV. Therefore, vehicle being not an LMV, submissions made by Shri Rawat that ratio of law laid down in case of Mukund Devangan will be applicable as no application. Thus, appeal filed by the owner of the offending vehicle is dismissed. Next para. As far as appeal filed by the
injured Om Prakash is concerned, looking to the treatment papers and that there was requirement for aspersion of blood which had choked the knee joint of the claimant Om Prakash, as is evident from annexure trust or institution and claim P11 in order to curb and that they have restricted that. तो फिर तो इनका the procedure and procedure which was undertaken, there being no papers for दवाई के कितने के पर्चे हैं? Taking into consideration papers of treatment and the medicines etc. is sum of rupees 30,000 in all will be justifiable under the facts and circumstances of the case. Full stop. Thus, there will be addition of rupees 25,000 in favor of the claimant Om Prakash, which will be payable along with interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Next para. As far as deceased Ramnivas is concerned, when income of deceased is taken at rupees 8182 into consideration, then it will come out to be 98,184 per annum. 40% is to be added towards future prospects. That will take total notional income at rupees 1,37,458. Full stop. Since deceased was a bachelor, 50% is to be deducted towards the living expenses of the deceased, and when multiplier of 18 is applied, then total pecuniary compensation will come out to rupees 12,37,122. Over and above, claimants will be entitled to a sum of rupees 30,000 under the head of loss of estate and loss of and funeral expenses, and another rupees 40,000 in favor of mother for loss of love and affection, taking total compensation to rupees 13,07,122 against a sum of rupees 8,26,000 awarded by the tribunal. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 4,81,122. ये 6% सबको invest करा देना. Monthly other terms and conditions of pay and recover etc. shall remain intact. Number 72. In this matter, on the last date, on 13th of October, I took 3 weeks time, to review our previous return and to file substituted return. So, in fact, the policy decision is required to be taken at the highest level of the state government. So, I by way of last intelligence, I most respectfully submit, that could this matter be taken up on 15th of December, by that time we'll be in a position to file. 3 दिसंबर को आ जाएगा ना, 10 दिसंबर को लगा देते हैं. 15 अगर आप कर दें साहब, थोड़ा सुविधा होगा. चलिए ठीक है, 15 कर देते हैं. None for the petitioner. Shri Prashant Singh, learned Advocate General for the state, submits that to review the order, a policy decision is to be taken. Full stop. State is stopped from taking any policy decision on account of ongoing model conduct of code which has been imposed by the Election Commission of India in view of ongoing election process to elect Legislative Assembly for the state of Madhya Pradesh. Full stop. He submits that they will be able to take a policy decision post declaration of result in the week commencing 4th December. Therefore, on his request, list this case on 15 December 2023. Okay, I'm so highly obliged. Well, this matter was requested by the other side today. But I नहीं उसके बाद. Serial number 50. Serial number 50.
Respect to the case of the implant. हाँ जी, क्या एविडेंस है? सर मर्ग है एनेक्सर A1. दीजिएगा रिकॉर्ड. कॉपी मैंने मेमो अपील के साथ भी फाइल की हुई है. नहीं, इसमें FIR है. FIR 7 दिन बाद फाइल हुई है, फिर तो उसमें स्टोरी चेंज करके आ गई पूरा. 5/2/2020 का 12/2 का. मर्ग कहाँ है? एग्जिबिट P1 नहीं है मर्ग. सर मैंने उसके साथ भी फाइल किया हुआ है. मैं देख रहा हूँ ना, इसी में रिकॉर्ड में तो पहले देख लूँ मर्ग क्या है. रिकॉर्ड में एग्जिबिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है. तो फिर कैसे देख लेंगे मर्ग? तो आपको फिर तो नहीं 41-27 के साथ फाइल करना पड़ेगा. देखिएगा, श्री राकेश जैन admits that Merg report is not part of the record of the trial court. He admits that therefore he will have to file an application under Order 41 Rule 27 to bring a new document on record which was not part of the record of the tribunal. He prays for and is granted 2 weeks time to file an appropriate application with the advance copy to Shri. आपका शुभ नाम बताइए. सतीश चौरसिया. Shri Satish Chaurasia, who may file reply to application within further period of 2 weeks list thereafter in the week commencing 11 December 2023. Serial number 54. Serial number 54. My lord, petitioner is challenging order annexure P2 by which supply of midday meal have been given to the respondent number 6, my lord. कब दे दिया? Annexure P2 page number 14. This is given on 29/11/2022. अब आज की अर्जेंसी है इसमें? स्टे है क्या आपके पक्ष में? रीडिंग्स पूरी है, जवाब अगर सब आ गया? हाँ, जवाब आ गया. हाँ, तो सुनेंगे इसको. लेकिन रीडिंग्स आर कंप्लीट. लिस्ट फॉर हियरिंग आफ्टर दीपावली वेकेशन इन द वीक कमेंसिंग 28 नवंबर 2023. तब इन्होंने साइन नहीं किया था, तुम ही लेके गए थे. सीरियल नंबर 86 आप दे दीजिए. सीरियल नंबर 86 बताएं वहाँ पे जाके कि भैया ये ऐसा ऐसा था. मैंने तो लिख के दिया. 28 को इन्होंने दिया गया था, इन्होंने साइन करने से मना कर दिया. इट विल बी टेकन आफ्टर वेकेशन. आज दांत में दर्द भी है, फाइल भी आधी मिली है, आधी रह गई है. आपने सबसे गुलाब चंद सुहाने submits that he is suffering from toothache and is not in a position to argue the matter. Coupled with the fact that he has received file from the insurance company today itself. अपील क्या इंश्योरेंस कंपनी फाइल करती है? नहीं, फाइल हमारी आधी. अच्छा अपसेट हो गया. अच्छा. बॉडी की सफाई. ठीक है. श्री सरदार अवतार सिंह has no objection to this prayer. List in the week commencing. सर फिक्स डेट, एनी फिक्स डेट सर इन दैट केस. आप कहीं बाहर से आते हैं? नहीं सर, मैं तो लोकल ही बैठता हूं. लोकल है ना? ठीक सर. वीक कमेंसिंग 4 दिसंबर 2023. चलिए. बना के चेक 28 का बना हुआ है. उसमें 19 से मना करा था नहीं करा था. योर ऑनर, after amendment in one case he has been granted, 2 are pending, your honor. There are 3 cases. काय के हैं ये? This is with regard to, your honor, with the Markfed we have returned our क्या है ये? बताइए. और rice milling the case. दिखाइए जरा, देखिए क्या है राइस मिलिंग. We have refunded the paddy, but still they want to withdraw our FDR actually. The order has been passed. इनका जवाब आ गया क्या? Reply is pending. We are praying for 4 weeks time. 4 weeks? आप हाई कोर्ट में खड़े हैं भाई. 4 weeks क्या होता है? You file reply within 10 days. श्री If it may be connected, your honor, and हाँ कर देंगे. नंबर लिख के दे दीजिए. WP लिख के दीजिए, पर्ची पे लिख के दीजिए. श्री रविंद्रनाथ त्रिपाठी for the petitioner, Shri Shobhaditya for respondent number 3, Shri Kshitij Rajpurohit for respondent number 1. Shri Rajpurohit is granted 10 days time to file reply. List on
22 नवंबर 2023 रिप्लाई बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 21 नवंबर 2023 पॉजिटिवली लिस्ट अलोंग विद सब उसी के जवाब आने के बाद प्लीडिंग जवाब के लिए टाइम लिया था पिछली बार। हाँ तो जवाब नहीं आया क्या? आया नहीं आया सर, अभी तक नहीं आया है सर। लिखिएगा श्री जयंत प्रकाश पटेल फॉर द पिटिशनर, none for the respondent number 1 for the respondents Union of India by way of last indulgence 3 weeks time is granted to file reply, failing which पढ़ तो लिया होगा ना, गोड़ तो पढ़ तो लिया ही होगा, कर दूंगा नहीं भाई, ऐसा है। आप अगर सामने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हो जाए। एक मिनट रुक जाए, तो काम होगा नहीं ना। आप मैंने इसीलिए वो लिख के दिया था, इसीलिए मैंने ये सब चीजें लिख के दी थी। तो मुझे पता है कि ये कोई भी चीज इस तरह की फैलाने में कोई पीछे नहीं रहेगा। मेलिंग में मत कोई फाइल है ना, इतना लिस्ट कितना समय दिया है? 4 हफ्ते 3 हफ्ते लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग 11 दिसंबर 2023। मैं ऐसी चेक भेज देता ना, तो अभी वो पता चलता कि इसी चीज को बैठ के फिर से लेके बैठ जाते, उसमें एक्सप्लेनेशन है, वो होगा बता देंगे, अभी बता देंगे मैं। ये लो आफ्टर नोटिस मैटर है माय लॉर्ड, आईआर आज तक के लिए था माय लॉर्ड। क्या है क्या ये माय लॉर्ड? एडमिट नो आफ्टर नोटिस मैटर है, ऑर्डर शीट डेट 3/10/2023 माय लॉर्ड। 3/10/2023 रिस्पोंडेंट सर्व होगा क्या? जी माय लॉर्ड। कोई आ नहीं रहा? जी माय लॉर्ड, मैंने मनोज चतुर्वेदी फॉर द पिटिशनर, नन फॉर द रिस्पोंडेंट्स। लेट दो रिस्पोंडेंट्स हैव फाइल्ड देयर वकालतनामा। Full stop. They are granted 4 weeks time to file reply, IR if any to continue. Not on the first date itself, not on 3rd of October, my lord had framed the issue for them to answer. And PS was directed to file affidavit. That was their very affidavit. Then on 20th October, your lordships directed not civil supplies as well as the state to file the parawise reply. They have not filed till date, my lord. The parawise reply have been filed. Copy of reply is in. अब फिर क्या हुआ? कब फाइल ही नहीं किया पैरावाइज? Sorry, they have not filed. It's a question of excess payment of 282 crores which they are now about to make to rice millers who are ineligible. Person like me who is eligible, I am challenging the clause by which this 3 times payment has been. तो सरकार के पास पैसे की कहाँ कमी है? बोरो करके देंगे आपको। वो तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी सर, अगर ये अलाउ हो जाती पिटीशन उनसे रिकवर करके हमको दे दिया जाए, क्योंकि ये तो बांट देंगे अभी पैसा। नहीं बांटने दीजिए, आपका अधिकार अगर एस्टैब्लिश हो, कोई ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। देखिएगा, लेट compliance of the order dated 20/10/2023 be positively made within 10 days. List in the week commencing 28 नवंबर 2023। चलिए My lord, may I check my lord? Item number 30, my lord. The link in WP number. अब नहीं वकील साहब, इसको क्या करेंगे इसका? My lord, ये नॉट रीच में जाएगा ये। मतलब नॉट रीच में इसको लिंक भर कर दे my lord, उसके सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसी में। ये तो चीफ साहब पहले डिसाइड करेंगे कि हमें सुनना भी है कि नहीं सुनना। हमने ऑलरेडी मैटर रेफर कर दिया है। हम ये WP सारी जाना चाहिए 482 वाली बेंच में, हमारा ये व्यू है। 482 नहीं है my lord। नहीं हमें मालूम है। हाँ May I request? आइटम नंबर 36 फ्रेश मैटर है, मैं परसों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आइटम नंबर 36 फ्रेश मैटर है, तो इसमें नोटिस इशू कर दीजिए। नोटिस की जरूरत है, डायरेक्शन के लिए बस। तो क्या छोटा सा मैटर अभी के 36 लगा दीजिएगा परसों के लिए। लिस्ट ऑन 9th। चलिए Okay.